क्या है यार, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा। हम्म, ऐसे 5 मिनट। क्या तू और मैं ही है क्या? आप सुना है तो का अभी तो हम इन दोनों आते हैं पुलों हम्म। मैत्री मैम भी हेलो। हाय मैथी। हाय। हाय सुमित। हाय। आज डिबेटर्स नहीं आए आज अभी तक। आ रहे हैं आएंगे। सर आप म्यूट पे हो। बोल भी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वो है तो क्या, क्या इमेज है क्या अपने पास? क्या है सर? वो इमेज है क्या जो अपना ऐड में जाता है? हाँ है ना। वो शेयर कर दे। ठीक। ठीक सर। आज मोतीलाल ओसवाल के साथ कैसा हुआ? सर चॉइस वाला था, मोतीलाल ओसवाल को शायद निशान ने दिया था। चांद ने दिया, अच्छा अच्छा। हाँ सर, ठीक था सर, अच्छा था। वो हम्म। बोला कि अच्छा है, समझता हूँ आगे की, फिर वो बाकी फिर कॉन्वर्सेशन जावेद और इंद्रजीत के साथ था उसको सर। अच्छा अच्छा। हाँ आई थिंक वो बोला है 2 कस्टमर देगा स्टार्ट हाँ करने के लिए। हाँ, उसने मतलब ये बोला, मतलब कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे बताए थे कि बेसिकली बोले मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत बहुत टाइम से लंबा पैसा लगा के रखे हैं, बट वो लोग क्या अल्टीमेटली बाय करता है और सेल कर देता है। तो बेसिकली जैसे आपका जो मैकेनिज्म है कि बीच के जो मोमेंटम होते हैं, प्राइस स्विंग होता है, वो बेनिफिट हो जाता है अगर हम लोग ये एसटीएम फॉलो करते हैं तो। राइट। सो इट कीप्स इंगेजिंग फॉर द ब्रोकर्स पर्सपेक्टिव एंड द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव बोथ। एग्जैक्टली। सो वो मैंने उसको क्लियर किया कि ये आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और क्लाइंट के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है बेसिकली। बढ़िया। तो इट वाज क्वाइट गुड सर, वो अच्छा था। हम्म। बेसिकली सब टीम्स कंप्लेन कर रही हैं कि इंस्ट्रक्टर टीम तो सिर्फ डिबेट के लिए तैयारी करती है, बाकी टीम्स को और भी कुछ कुछ करना पड़ता है। तो अभी हमको इंस्ट्रक्टर टीम का काम बढ़ाना पड़ेगा। सर अभी हमारा प्राइमरी रोल ही है, तो इसमें हम क्या करते वो ठीक है, अभी मैं प्राइमरी रोल रीडिफाइन करता हूँ। हैं? ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं कि अब इंस्ट्रक्टर टीम को बाकी सारी टीम्स को रिसर्च करके देना पड़ेगा। हाँ चलेगा ना। यस सर, वी कैन डू इट।
क्या आइडिया है सर? पर सर उसमें अगर इंस्ट्रक्टर टीम के अपोज में है उनके लिए भी रिसर्च करके देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। वो तो फिर आपको पता है ना सर कि वो क्या यूज करने वाले। तुमको क्या लगता है, तुमने रिसर्च किया वही यूज करेंगे वो और भी यूज करेंगे। आई डोंट थिंक सो और यूज करेंगे। 80 हम्म। to 90% तो वही डेटा दिखाएंगे जो हमने शेयर किया। देखते हैं, टाइम विल टेल। अभी ये डिसाइड हुआ है कि 10 डिबेट के बाद पॉइंट्स के बेसिस पे जो फर्स्ट और सेकंड टीम होगी उसका फर्स्ट सेमीफाइनल होगा, जो थर्ड और फोर्थ टीम होगी उसका एक सेमीफाइनल होगा, फिर जो सेकंड फर्स्ट सेमीफाइनल की जो लूजिंग टीम होगी उसका एक कंपटीशन होगा विनर ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल के साथ, फिर उससे फाइनल होगा। तो 4 डिबेट्स और होंगे। बेसिकली सर आईपीएल फॉर्मेट है। आईपीएल फॉर्मेट या। और फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम को अवार्ड दिए जाएंगे। थर्ड को क्यों सर? हम्म। थर्ड को क्यों, फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं? क्या? मैं कह रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ही अवार्ड्स होते हैं ना यूजुअली, थर्ड को नहीं होता कुछ। मैं तो पांचों को देने का सोच रहा था। दे दो सर। मजा तो जब है जो टीम जीते बोले हमको नहीं चाहिए अवार्ड, हम नहीं लेते। ऐसा कोई नहीं है सर। अरे इंडियन टीम बोली ना हमको नहीं चाहिए ट्रॉफी। सर अपना डिबेट तो इंटरनल है ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ी। और उसका तो सर कैश प्राइस भी है ना कुछ? नहीं, कैश, सबका कैश प्राइज ही रहेगा, बिना कैश के कोई प्राइज लेने वाला सेफ को सर चेक में चाहिए। नहीं। कितना टाइम हुआ? ऐसा टाइम हो 2 मिनट है। गया, 2 मिनट 7-3। हुआ। अच्छा। अपूर्वा ज्वाइन की क्या? मैम नॉट अपूर्वा। जॉइंड येट प्रतीक, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं उसको फोन करूं क्या वापस। और शी हैजंट ज्वाइन येट। शी हैज नॉट जॉइंड इट, दैट इज व्हाई आई वाज वेटिंग कॉल फॉर कर हर। दो, कॉल कर दो, एक बार कॉल कर दो। हाँ। आ गई। आ गई। आई थिंक शी सेंट मी अ मैसेज, लेट मी चेक व्हाट द मैसेज इसका। किया गया ज्वाइन। शी हैज नॉट जॉइंड। सर एड्रियन इज जॉइंड। अरे वाह,
Welcome, Adrian. Hi, Etienne. Hi, Pratik. Hi, Adrian. Hi. So shall I call her, Pratik? No. She got the link. Okay. फाइल्स रिपोर्ट्स प्रेस्क्रिप्शन वगैरह फाइल आप लेकर आए थे ना? अरे कहीं नहीं जा रही यार, फाइल्स डिबेट अटेंड करना। देख वो रखे। देखती हूँ आ रही हूँ सर स्टार्ट करना है या रुकना है? अपूर्वा को आने दे। ठीक। तब तक वो कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे, टॉपिक वगैरह इंट्रोड्यूस कर दे। शादा भाई स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ। Good evening, everyone. Our today's debate topic is, can every small idea become a big idea? We as a product development team are going to favor this topic. That is, yes, every small idea can be a big idea. Our first question is, होल्ड ऑन next. होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुक जा रुक जा, यहाँ पे रुक जा। मैत्री जरा कॉल करके देखो क्या चैलेंज जा रहा है उसको। Okay. So, Saif, before you start with the first question, Mhm. can we just make the audience understand that what is both the team's definition of a small idea and a big idea? रुक जा, लेट द ठीक। जजेस कम बिफोर यू डू ठीक दैट। ठीक ठीक। So I have shared the link once again. She cannot join on the link that she's trying to. So I have resent the link. So I think now she will be able to do it. I don't think it's an issue with the link. I think she's having some internet issues. Probably, yeah, because it's very easy. The moment you click, the link is open. नहीं मैत्री, श्रीकांत को कॉल करो तो। Okay. सैफ एक मिनट स्क्रीन स्टॉप करना ना। कार्डियक हार्ट फेलियर आपको तकिया अंदर से रख के दूं I think he is saying that he is in some kind of urgent work. Hello. Yes, Maitri, you are audible. So Shrikant is saying that he is busy in some kind of very urgent work and he is amongst people, so he cannot be joining.
Okay. I guess Pratik sir is on mute actually. स्क्रीन बंद करना है क्या निशांत? हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ, अपनी स्क्रीन खुला रहने दे। आई मीन सर मैं शेयर करा था इसका वो। इसको रख, तू रख के शायद करेगा। शायद आप हाँ? क्या हो गया? तो क्या हो गया? हम्म? ठीक है, so if both teams are okay, I'm appointing Sumit as one of the judges. Yeah. Okay. I ओके both, ओके सर। ठीक है, so we'll have Sumit and Maitri as the two judges. Okay, Okay. Okay. ओके ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है निशांत। ओके ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अभिनव, Yeah. you can So start. very good evening, everyone. Today we have gathered here to understand a very fascinating topic, that can every small idea become a big idea. So before I present our first question, I just take 1 to 2 minutes of the time just to make the audience clear that what is the definition of a small idea and a big idea to the entire audience. So a small idea is basically when an idea is generated, but no new thoughts or innovations are made based on that idea. This simply means कि अगर आप लोगों को कोई का एक आइडिया आया है, उसी आइडिया को लेके if no new thoughts or no new innovations are being done, उस थॉट पे, उस स्मॉल आइडिया के थॉट पे अगर कोई नए इनोवेशंस आपको नहीं आ रहे, this basically means this is just a small idea. Now the definition of big idea is exactly the opposite. When new ideas are formed and new thoughts are generated based on the small idea, and people use it on their own way, in their own purpose. Simple example of a small idea and a big idea can be, let's say, a fidget spinner. It's just a small idea. It exploded in popularity, but it did not trigger no new innovations or thoughts. Similarly, what is the example of a big idea? We can say GPS, right? GPS, it was originally invented as a military tool, right? But it sparked new ideas in navigation, logistics, ride sharing in Uber, Ola. We have seen that in personal fitness also, where it tracks certain activities based on your GPS. So this is the basic definition of a big idea and a small idea. I hope this definition is clear to everyone. Now I'm just going to start with my first question. So before starting the first question, you can see that how a big idea and a small idea can create a huge impact. On the right hand side, we can see a yellow bulb, which basically symbolizes a big idea. And on the left hand side, we can see that there are several small bulbs. These are my small ideas. So this image basically means that how small ideas can outplay or outsmart big ideas, because new thoughts are being generated based on the small ideas. Even if the idea, which is big, has generated, let's say, more revenue or more outcome, but the main purpose of small ideas is to have new thoughts or new innovations based on the small idea. So now the first question is that is some property necessary in a big idea to become? In a small idea to big idea to become a big idea. Just a second, disturbance was. Yeah, so our first question is that uh, is some property necessary in a small idea to become a big idea? So my answer is obviously yes, that every small idea should have, not every small idea has certain properties. Like properties meaning that it should have certain properties like scalability, adaptability, universality, and ability to trigger new thoughts. As I mentioned in the definition itself, that it is very important that a small idea should be able to create new thoughts or trigger new innovations. Like in STM, if I just wanted to ask everyone in the audience that if when your time is being started, you can just say that is STM a big idea or a small idea. Personally, for me, it is a small idea, because as of now, no new thoughts or no new innovations has been generated on that small idea. The second point is that a big idea inherently requires the seed of transferability and innovation potential. Without that, the idea will always remain narrow. Taking the same example of STM.
see, STM is a small idea as of now. Why it has been not been able to become a big idea? Because the innovation potential is not been reached there, because we being a team of 30-40 people, we have not been able to thought more of how to use STM in our own way. Yeah. So as I was talking about the core properties, there are certain core properties which are mentioned over here, which is first is scalability. Now, what do I mean by scalability? It simply means that can I apply it in multiple contexts? For example, if one thing has been invented or discovered for one particular problem, can the same thing used in a different context as well? The second is adaptability. Can it evolve with time and innovation? If a certain thing has been invented or a certain idea has been generated over one time, can the same idea can be evolved in such a manner that it can be innovated over the time? Next is universality, that can it solve a broader problem? See, many ideas which are formed, they basically do not they are not basically trying to solve one problem, but they are trying to solve a broader problem. So ideas, in the next step, you will see that ideas, sorry, okay, yeah. If ideas without these properties will always remain small. They cannot spark new innovations or uses. Unless and until these properties are there in certain ideas, they will always spark new innovations because of these properties. So we can basically say that big ideas have transferable assets. They act as building blocks. Now soon I'm going to tell you real life examples, very simple examples, just such as fire. It started as warmth, but we all know that how fire has been evolved around time. It was used in cooking, in energies, in metallurgy, right? So it become a civilization step, and how a small idea became a big idea. Second example is wheel. See, unique property, it moves in a circular motion, but again, this was a small idea. When did it become a big idea? When it was scaled into transport, machines and gears. So these are the real life examples. I will also tell you the properties of real example. Nishan, next slide, please. Real life startup examples. Previous ones was just the ideas example. You can see Google started a small university project called the Backrub, where they used to rank their pages. This was a very small idea. Then when I was talking about properties, emotional or providing a broader solution, this example is WhatsApp. People always wanted a simpler way to talk to their friends or relatives across countries, right? It solved a real pain point. Next is the uniqueness or differentiation. Airbnb. This is completely, we all know what is Airbnb. That is completely different from hotels. This allows people to rent the space or the rooms which they have in spare and earn money. Next is relevance and timing. Zoom, we all know how Zoom evolved after COVID. As we all know, it was launched earlier, but it gained popularity and more functionality after COVID. Next is scalability and adaptability. We all know how Amazon started with books, but later on, the model adapted and scaled into something very unique and something that is extraordinary, used all over the globe. That is AWS, and how AWS has been popular, and how everyone in the every startup or every company has been using AWS. We all know that. Time up. Yeah. Yes, yes, your turn. Okay, so can we ask questions right now? No, you need to explain the question first. Okay, so Shada, please screen. So the question was, is some property necessary in a small idea to become a big idea? And our argument here is no, there is no single property that must be present in a small idea for it to scale. To back this argument, next slide, we have certain points. First, that is diverse success paths. When you look at successful companies' innovation, they often succeed via different paths.
Some had unique technical innovation, others simply execute extremely well in a known domain. Now, in an article in the Picking Winners study, success probabilities of startups were modeled based on many features, such as founders triad, sector, invest, investor background, etc. No single factor dominates all cases. Shada will provide you with the link for this article in the chat box. Now, a second argument here is hidden champions. The meaning of hidden champions is small to mid-sized companies that dominate niche market but are not widely known publicly. Now, often this company's success usually depends on very unique and universal properties because they focus intensely, execute well, and take advantage of certain domains in their own sector. They don't have any common triad in them, which we can say that a small idea needs to be a big idea. Third, we have context dependency and conditional success. What matters can depend heavily on domain, timing, regulation, culture, competition, and also consumer behavior. A property that is powerful in one industry may be irrelevant in another industry. So a certain property in another one industry might be powerful, but in another industry, it is completely irrelevant. Third, we have failures despite good priority properties. Now, properties such as strong technology, high uniqueness, large market still fail due to poor execution, team mismatch, regulatory hurdles, or even shifts in market behavior. Next slide. Now, example of Airbnb. Airbnb began as a 3 people initially renting air mattresses to cover rent. It was not a very polished or category defining plan at day one execution, but later on they start learning and iterate and made it huge. So there are no such unique properties that we need for a single small idea to become a big idea. That's it, I think. Next. Again, we have example about Instagram. Initially, Instagram's founder wanted to create a whiskey app. They wanted to know best whiskeys in their environment, in their neighborhood. So they created an app called as Bourbon. After a few years, they started to see that people often use it as a simple photo sharing application. So they switched this into a complete different app and call it as Instagram. And Instagram wasn't unique at first execution and focus made it huge. Now, there are no certain properties or particular properties that made this small idea into a big idea, but rather execution and focus and teamwork that make such small ideas into big idea. That's it. That's Are you done, Seth? yes. Okay, now you guys can ask questions to each other. So, Saif, as you mentioned that Mm-hmm. you gave an example of Airbnb, right? Right. So, do you know the exact story why they changed their business from mattresses and from renting houses? Renting houses. Renting houses. They still rent houses, right? Or do they have a different business No, idea now? actually Airbnb succeeded because it had several of the properties which we say are necessary. They did not start with everything perfect, right? They started with mattresses, but eventually they saw that there is a huge scope apart from just selling mattresses. You understand the Mm-hmm. point? What you're saying is that no properties are necessary, but eh, on top of it, you just helped me to prove my point that how they adapted to the entire market.
where they saw they can easily scale their business by renting spaces which are not used. Okay, So so that your they, point is the second property that you have listed, that is adaptability. okay, Just because they have the property of adaptability, they succeeded. They made a small idea into big idea, right? yeah. So now, given your listed points, that is scalability, adaptability, and university. So is this all this? If I have an idea, let's say it is an STM, if I have these three properties, would my idea be a big idea? So that is not the question. If your idea based on STM has certain properties which can help the entire strategy to scale, then it will become a big idea. That is my argument. So if STM does not have any of these three properties, then it's just going to be a small idea, right? Not necessarily, even if STM has either one of the property, let's say scalability or adaptability, it can easily become a big idea. My point is there has to be certain core properties Mm-hmm. certain core properties in a small idea to become a big idea. Okay. So when you are taking the example of Airbnb, right? Mm-hmm. We all know that how Airbnb's success wasn't immediate. They faced rejection, they made pivots, right? But many ideas similar to the minimal origins that never, achieved what Airbnb did because they were able to find those pivot friendly properties into their business. That is why they succeeded. If there were no properties into their mattress business, sorry. So they won't be able to have this renting space as a business. See, starting small is not the same as lacking properties. You understand my point? Right. The air mattress idea only took off because it was a hit because of a strong demand. Then they adapted. If it had been no adaptability or no demand, it wouldn't have seen certain growth. Okay. Yeah, that is my point. Okay, now, Saf, you can ask the question to Abhinav. Now, Abhinav, the three properties that you've listed, you have mentioned one of them should be required to be a small idea to be a big idea. Yeah. Now, apart from this, uh, if we have a single property, right, we have a scalability in our idea. So all small ideas can be a big idea. Is it true or is it not? So my point is that whatever properties which I have listed, Mm-hmm. if the product fits any of the properties, then the small idea can become a big idea. If the In case, product does not fit into any of these three properties, then a small idea cannot be a big idea. It's impossible. exactly, because a small idea has to have certain properties in it to become a big idea. That is my whole point. And these three core properties which I listed, scalability, adaptability and universality, इन तीनों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा point आता है, that is ability to trigger new thoughts. If new thoughts are being able to get triggered on my small idea, then that is more efficient and more powerful than all the three core properties. If new ideas are being generated on my small idea, then it can easily become a big idea. And to support our question, that you guys have heard obviously Netflix, ठीक है, Netflix सभी लोगों ने सुना है, बट Netflix एक्चुअली में जब बिजनेस शुरू हुआ था तो वो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नहीं था. जो उसका एक्चुअल ऑनर है उसका पर्पस कुछ और ही था. वो बेसिकली जेफ बेजोस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था और दे वांटेड टू बीट दी अमेजोन. वो उसको वैसा एक ई कॉम प्लेटफॉर्म शुरू करना था, बट नहीं, ही सॉ कि
ही सॉ निशांत। कि हाँ हम्म हाँ हम्म। हाँ यस तो अभी ये ठीक है, मैं समझ गया। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक प्रिंटिंग प्रेस। ओके। ठीक है, तो हम लोग की जो तीन प्रॉपर्टीज है, स्केलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, तो इसमें से कौन सी वाली फिट हो रही है प्रिंटिंग प्रेस में? इट्स अ बिग आइडिया राइट नाउ, राइट? प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट अ बिग आइडिया, प्रिंटिंग नहीं, प्रेस इज अ स्मॉल आइडिया। प्रिंटिंग Why so? वाई Why so? Let me tell you why so. Why so? Just the reason being that क्योंकि आप देख सकते हो पूरे इंडिया में कितनी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, कितनी नहीं प्रिंटिंग नहीं की नहीं नहीं शॉप्स है, नहीं, कितनी निशान प्रिंटिंग की निशान, शॉप्स है। देखो। हाँ। सो अभी यू आर लिविंग इन 2025, ठीक है? इमेजिन क्या तुम गॉट इट। लोग, हम लोग ले रह रहे 11th सेंचुरी, ठीक है? ठीक है। और तुमको, तुम्हारे पास कुछ किताब नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू रीड, यू डोंट नो एनीथिंग। ओके। अभी now there is something called as a technology comes into play, printing press. It's a small idea, but then हर जगह, कोने कोने में we you can read, you can learn something. गॉट इट। ठीक है? Yeah, so You printing can press. print books in England and you can use it in India. Anywhere. So it's a big idea, right? इट्स बिग आइडिया बट बाय द टाइम पीपल अडॉप्टेड टू दी सिचुएशन, उन्होंने टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, यूज किया, इसलिए दे आर एबल टू फिगर इट आउट। वो अभी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर इससे आज से 50 साल पहले की बात करेंगे तो एवरी वन वॉज राइटिंग डाउन इट बाय सेल्फ। आज से 50 साल पहले ऐसा हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, बिकॉज दे नहीं, हैव मैं समझा अडेप्टेड। नहीं, ये 50 साल। पार्ट डिबेट का कंप्लीट करते हैं अभी। लेट्स हियर व्हाट द ऑडियंस हैव टू से। वी आर गिविंग द ऑडियंस 10 मिनट्स टू टॉक अबाउट दिस। हाँ सही है हाँ सही। Anybody from the audience that wants to speak on the topic? सिर्फ एक क्वेश्चन तेरे से है हम्म। कि जैसे फेसबुक अभी है, ठीक है? ठीक है। फेसबुक के पहले माइस्पेस नामक एक एप्लीकेशन थी। हाँ हाँ। तो फेसबुक क्यों, वो भी तो फेसबुक जैसा ही काम करता था, तो फिर वो क्यों फेल हो गया? देखिए, जो मार्केट एग्जीक्यूशन और टीम वर्क मैंने जो बताया वो स्लाइड्स में, हम्म। क्या देयर इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी called as teamwork and execution, how you execute your ideas. And MySpace failed this execution part. And of course, Facebook Guys, was. 1 minute. Just give me 1 second. Apurva Pathak, who is a lecturer in Nagpur University, has managed to join finally. She was having some internet issues. So she's definitely going to be a part of the debate. She's going to at least, send her marks if possible for this question, but definitely for the next two questions. So I just wanted to welcome her for the debate. Please go ahead with the debate. Yeah. हाँ, सो इंद्रजीत, आपका क्वेश्चन MySpace फेल हुआ। हाँ। So MySpace failed due to execution and teamwork. And after that, Facebook came up with the idea. Of course, they were a little bit inspired by MySpace, and they scale their platform, and hence MySpace was just a small idea, but Facebook is right now a big idea. I think हेलो। Hmm. मुझे एक क्वेश्चन है, दोनों टीम से एक क्वेश्चन है कि जो अभी प्रिंटिंग प्रेस की बात चल रही थी और जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी, तो पेन को आप क्या स्मॉल आइडिया मानेंगे या बिग आइडिया मानेंगे? जो इसको पेन है, राइटिंग पेन। Big idea. Definitely a big idea. Yeah. यस यस यस। ओके, तो फाइन। वही एक्चुअली दोनों टीम से वही पूछ। and I have a question to Avinav. You are saying कि adaptability and scalability is a unique property, right? core properties. Core property, but these are the property of execution, not the property of idea, right? We are talking about the properties of ideas. No, but you need to understand one thing कि अगर आइडिया आया, उस आइडिया को लेके बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं ना. We just have to take some or the other action. If I go back to Indrajit's question where he asked कि MySpace क्यों fail हुआ,
It was because of lack of adaptability. Because MySpace did not. then again, आइडियाज फेल नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन फेल हुआ है, राइट? आइडिया माइस्पेस और फेसबुक का सेम था, ठीक है? माई फेसबुक ने माइस्पेस का आइडिया ही उठाया है और उन्होंने एग्जीक्यूशन अच्छे से किया और वो सक्सेस हो गया। बट यहाँ पे आइडिया फेल नहीं हुआ है, आइडिया इज सक्सेसफुल, राइट? अभिनव, But the question. बट here सिमिलरली देखो, बट सिमिलरली सुमित, व्हाट यू आर सेइंग कि तुमने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, लेट मी शेयर यू कि अभी जो मैं नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दे रहा था, नेटफ्लिक्स में उसका आइडिया कुछ और ही था, बट अल्टीमेटली उसका आइडिया फेल हुआ। नहीं, इट्स एंड अ पार्ट ऑफ ही चेंज द आइडिया कि पूरा पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ा। ही दैट कन्वर्टेड इनटू सीडीज, डीवीडीज। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, पर यू आर सेइंग, तो वो जो सुमित, एग्जांपल जो माया ये स्पेस का है, वो सिमिलर एग्जांपल के निशांत, साथ दे दिया है मैंने। हियर वो बोल रहा है क्या, फेलियर ड्यू टू, अब आइडिया कितना भी अच्छा हो, वो चांद पे जाके कॉलोनाइजेशन करने का हो या कुछ भी हो, बट एग्जीक्यूशन में फेलियर है। योर प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जीक्यूशन, ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडिया प्रॉपर्टी। एग्जीक्यूशन में आप स्केल नहीं कर, स्केलेबिलिटी का इशू है, अडेप्टिबिलिटी का इशू है, देन ऑफ कोर्स द आइडिया इज गोइंग टू फेल। I don't think it is justified to call an idea that is failed as an idea, right? And for us, for this the purpose of this debates, let us just focus on ideas that have at least succeeded to some level before we start calling them an idea, right? Is that fair, or do you think it is not fair? I'm asking both the teams. राइट सर। ओके, दैट्स फेयर। बिना सक्सेस के किसी को आइडिया बोलना, ऐसे तो मेरे को आइडिया आया कि अपने को जुपिटर पे जाना चाहिए, that, but I have no way of figuring out how to go there. So that is not an idea. Unless I've achieved some level of success to it, it is not fair to call it an idea, right? I'll give you an example, right? First thing that is required for something to become an idea is that it has to be able to stand on its feet. For example, जब जनरल रिलेटिविटी डिस्कवर किया आइंस्टाइन ने, राइट, उसके बेसिस पे उसने किसी और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि जुपिटर का डिस्टेंस कितना है सन से। फिर एक एक उसके चारों ओर उन्होंने देखा कि एक एक सैटेलाइट है जुपिटर की, उसके चारों ओर घूम रही है। फिर उन्होंने देखा कि वो सैटेलाइट जब जुपिटर से दूर जाती है, मतलब जब अर्थ से दूर जाती है, तो वो 8 मिनट डिले दिखाती है उसका, उस सैटेलाइट का, जो हमको जो उसका टाइमिंग होना चाहिए उसमें 8 मिनट का डिले दिखाती है। और जुपिटर जब अर्थ के पास आ रही होती है तो 8 मिनट का स्पीड दिखाती है, 8 मिनट से आगे दिखाती है, एक टाइम में 8 मिनट से आगे दिखाती है, एक टाइम में 8 मिनट से डिले दिखाती है। तो somebody figured out कि ये जो डिले आ रहा है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज लाइट itself has takes time to reach earth, right? So firstly the idea of relativity stood on its own self, and by believing in that idea कि ये idea work करता है, a second property was discovered, that the speed of light was calculated for the first time by knowing that general relativity works, right? So the fact that another idea could be built on the first idea only happened because the first idea in itself was successful. The second idea cropped up only because the first idea was successful. So let us just focus on ideas that are successful and other ideas that built on top of those successful ideas. Is that fair? यस सर। ठीक है। यस। ऑडियंस में एनीबडी एल्स? इंद्रजीत, एनीबडी एल्स? सर जैसे आपने कहा कि एग्जीक्यूशन, तो उसको लेवल में कहा आपने, तो हाउ, यानी कितने परसेंटेज पे हम कह सकते हैं कि स्मॉल आइडिया बिग आइडिया है? कितना परसेंटेज आप उसको ऐसा बोल सकते हैं? कौन कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, जावेद पूछ रहा हाँ, तो जावेद क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या, फिर से रिपीट करो अपना क्वेश्चन। आपने कहा ना सर, जैसे जब तक कोई स्मॉल आइडिया एग्जीक्यूशन वाइज उसका सक्सेस नहीं होता है एट सम लेवल,
तो उसका परसेंटेज वाइज कितना हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतने परसेंटेज पे उसका सक्सेस फेल भी हो गया है तो भी नहीं, वो बट बिग हियर वी आइडिया। आर नॉट टॉकिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, वी आर नॉट सेइंग कि कितना पैसा कमाया, कितना सक्सेस किया। काम करना चाहिए, ओके। राइट? कि कस्टमर को जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो प्रॉमिस, राइट? It is not that MySpace was not a successful idea. It was successful in its own terms, but it ओके। just did not last the impact of the market. कि भैया मार्केट ने उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया. But it's not that MySpace as an idea was not working. It is just that other ideas built on top of that idea and built something even better. राइट। ठीक है? So I don't अभिनव, think MySpace is an unsuccessful idea. It is just that other ideas were bigger than that and they developed on top of MySpace and became big ideas. ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है Hmm. अभिनव से। जैसा कि अभिनव ने एक पॉइंट रेस किया है कि फिजेट स्पिनर इज ए फेलियर, करेक्ट अभिनव? Yeah. But after it came, there is a lot of huge demand of fidget toys. It inspired the lot of innovation for the fidget toys. So, do you think it is a failure? अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम फेलियर वाले आइडिया को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो क्या तुम्हारा फिजिट वाला स्पिनर का पॉइंट वैलिड है अभी भी? कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हो? सर फिजिट स्पिनर वाला हाँ। जो अभी मेंशन किया था कि उसने बताया कि जैसा फिजिट स्पिनर आया, बड़ा उसने मार्केट क्रैश किया, लेकिन बाद में वो चला गया, ज्यादा उसका ट्रेंड में रहा नहीं। बट मेरा काउंटर पॉइंट ये है कि वो फिजिट फिजिट स्पिनर आने के बाद बहुत सारे दूसरे फिजिट टॉयज आए उससे इंस्पायर होते। जो फिजिट टॉयज का जो सेलिंग हुआ स्पिनर्स के बाद वो ज्यादा बढ़ गया, और उन्होंने बताया कि ये आइडिया एक फेलियर नहीं, आई है। डोंट थिंक इट्स अ फेलियर. आई डोंट थिंक इट इज फेयर टू कॉल इट अ फेलियर. फेलियर, जो यस वो इट इज प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है. कर रहा है। इट वाज एन स्मॉल आइडिया, इट वाज एन स्मॉल आइडिया। उन्होंने नहीं सोचा स्केलेबिलिटी के बारे में, उन्होंने नहीं सोचा पोटेंशियलिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। दे जस्ट लॉन्च इट। सो वी कैन नॉट से कि भाई कि इसमें नहीं, ठीक है, स्केलेबिलिटी चलो नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. There's a lot of ओके interesting thoughts that got discussed in the first question. Let's move to the second question. I'm sure we'll have ample time to discuss all the details after we finish our three questions. So, Yeah. So well, just I never said that fidget spinner was a failure. It was just a small idea. After we get time, I'll explain you why I call it a small idea. Let's just continue with the ओके second श्योर question. Yeah. श्योर। good. हेलो, am I Yeah, yeah, audible? yeah. हाँ Yeah, yeah, निश, you're on. Okay. So basically, our second question is to, like, is market timing and readiness necessary for a small idea to become a big idea? So definitely we call it as yes, क्योंकि timing is the main and key component in term of anything. Basically, अगर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, let me show you over here that yes, a great idea at a wrong time it is equals to failure. We do have a, some sort of example over here, but before that, I would like to show or I would like to talk about the infrastructure must exist. Meaning Consumer habits. before. Yes, sir. कुछ नहीं. Go ahead, go ahead. Okay, okay. So here are few examples with connect this that why it is so important. कि timing क्यों important है. So as example, GPS in 1970s only became a big when smartphone, internet and maps matured in 2000s. उसके पहले जीपीएस का नॉलेज इतना लेवल पे नहीं था, लेकिन वो टाइम नहीं था. अगर जैसे टेक्नोलॉजीज आ जाती तो अगर जीपीएस एक्चुअल में बिग कब बना, आज की तारीख में लेट 2000s में. क्यों? क्योंकि वहां पर वो डिवाइसेस अवेलेबल हो गई थी जिसकी हेल्प, जीपीएस की हेल्प से वो डिवाइसेस को बेनिफिट मिल रहा था. आपको क्लैरिटी आ रही थी कि इसके साथ हम लोग और दूसरे दूसरे क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या दूसरे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं. जैसा कि आपने बोला कि एक बड़े बड़े आइडिया की डेफिनेशन क्या होती है, तो बड़े आइडिया की डेफिनेशन यही होती है कि उस पर्टिकुलर छोटे आइडिया से मल्टीपल चीजें डिफरेंट डिफरेंट लोग और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक पहुंच सके. कि अगर मैंने कोई सी चीज अपने लिए बनाई लेकिन बाद में उसका यूज दूसरे लोगों ने अपने अपने यूज के लिए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया,
तो सेम इज द जीपीएस। जीपीएस बनाया पर्टिकुलर चीज के लिए था, लेकिन बाद में जब मार्केट इवॉल्व हुआ, चीजें आई, टेक्नोलॉजीज आई, तो स्मार्टफोन को भी बेनिफिट मिला, इंटरनेट से भी बेनिफिट मिला, और अल्टीमेटली जैसा कि अभिनव ने बोला कि डिफेंस सिस्टम में उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, जियोग्राफिकल सिचुएशन से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज व्हाट हैपन। और जनरल लाइफ में लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें कहीं भी जाना होता है तो दे यूज, सॉरी, गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स का यूज बेसिकली जीपीएस के थ्रू हो जाता है। इट हेल्प्स अ लॉट। सिमिलरली टेबलेट कंप्यूटर्स, इट अराइव्ड इन द मार्केट इन 1990s बट फेल्ड। क्यों? अगेन प्रॉब्लम वही था कि टाइमिंग गलत बैठा। और आईपैड आया 2010 में, लेकिन अब आप देखो आज की तारीख में आईपैड कितना बिक रहा है। सो दिस इज व्हाट द टाइमिंग इज। इलेक्ट्रिक कार पहले भी आया था, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। जब टेस्ला ने, एलॉन मस्क ने टेस्ला लेके आया, टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, सारी चीजें आई, उसके बाद जाके रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। इससे पोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, पेट्रोल की कार से। अब ये वी हैव टू मूव ऑन टू दी इलेक्ट्रिक कार। पहले आ चुकी थी बट उसको इंपॉर्टेंस उतना नहीं मिला, क्योंकि टाइम गलत था बेसिकली। सो दैट इज व्हाट आर दी एग्जाम्पल से कि टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी एनीथिंग और द आइडिया। एंड सिमिलर इन केस कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया स्मार्ट वॉच 2004 में। अनफॉर्चुनेटली इट नेवर मेड इट टू द मार्केट बिकॉज इट वॉज टू फ्यूचरिस्टिक फॉर कस्टमर। उस टाइम पे लोगों ने इतना सोचा नहीं भी नहीं उस बारे में कि ऐसी कुछ चीज या ऐसी कुछ डिवाइस आ सकती है जो स्मार्ट वॉच के रूप में काम करे। एंड लेटर ऑन लेटर ऑन बिल ग्रोस द फाउंडर ऑफ आइडिया लैब एंड माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें हुई। उसके बाद बिल ग्रोस talked about that timing is the single biggest reason why startup grows successfully. His statement was based on the survey of the 100 idea lab companies and 100 non-idea lab companies. He had conducted a find out what made startup succeed. The result were surprising. Timing accounted for 42% of the differences between successful and failed startup. ये बिल ग्रॉस ने बोला। So that is why I'm and we are supporting that, yes, why the time is so important. अगर टाइम के पहले कुछ चीज होगी तो बोला आपने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत मैं रियलिस्टिक एक बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बिलीव करते हैं कि जो समय पे होता है अच्छा होता है। सो इससे बेस्ट एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता, आई वुड से। राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अ टाइम स्केल ओवर हियर। इन ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो 90% स्टार्टअप फेल्स, उसमें से 10% जो होते हैं वो न्यू बिजनेस फेल विद इन द फर्स्ट ईयर। 42% ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू लेक ऑफ द मार्केट नीड। 80% ऑफ स्टार्टअप इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री फेल। और अगर मैं सिर्फ यूएस की बात करूं यहाँ पर तो 65.3% स्टार्टअप फेल्स इन द यूएस। और ये फिगर जो है ये 90 से फेलियर रेट्स भी स्टीडी है बेसिकली। और इफ वी टॉक अबाउट द इन इंडिया पर्सपेक्टिव, key figures on the Indian failure of the startups. So in 2023, about 15,921 Indian startup had shut operation. In 24, approximately 12,700 startups shut down. तो अगर मैं दोनों साल को क्लब करूं तो नियर अबाउट 28,000 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट कि ठीक है, टाइम इज बेसिकली अगर मैं इन्फो, टाइम इज अप, वी आर मूविंग टू द सेकंड टीम। ओके सर। Okay, Nishant. So you have told us about Bill Ross startup failure study. ठीक है, तो बिल रॉस का एक आर्टिकल है और उनका एक टेक टॉक भी है। उन्होंने ये बोला है कि टाइमिंग वाज द सिंगल बिगेस्ट डिटरमिनेंट ऑफ स्टार्टअप सक्सेस, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। टाइमिंग इज ऑफ कोर्स हाईली इंपॉर्टेंट to make a small idea big idea, but it's not strictly necessary. Example, clear example I will see next slide, but my points next slide. A visionary founder can shape timing. Example, Elon Musk for Tesla, and then we have Steve Jobs for Apple. Being early can offer competitive advantage if one can sustain investment until adoption accelerates.
So being early into something can also help you. If you're early before, it's not the timing to launch this product, you're little early, it can also help you accelerate your product. Timing may be more critical in some industry than other, in less fast moving or regulated sectors. Now, there is a Paul Graham's article which says, do the hard manual work early and you can create your own timing. You can check the article in the chat. Now, example for this, we have, next slide. We have Slack. Slack was an internal tool. When Slack was invented, it was just an internal tool, और market में कई सारे ऐसे tools थे that was better than Slack. So there were many chat systems in the market. There were many iOS apps as well as Android apps. So अगर timing was a factor, Slack was too late. हम बोल सकते हैं क्या Slack का time चले गया है. It's not going to be a big idea. But still, Slack did not fail and they pivoted into a different chatbot system and they are still a big idea. Next slide. Now, iPhone and Tesla. Okay. So iPhone was they came up with the first smartphone and it was very nascent stage. We don't have high speed internet. It was just an initial stage. People were just getting adopted to laptops or keyboards, and so then Steve Jobs came up with a very unique idea, smartphone. You can say that it's just too early for this idea, but it wasn't. मैंने एक पॉइंट बोला हूँ कि विजनरी स्टार्टअप कैन शेप टाइम. सो दिस इज एन एग्जांपल स्टीव जॉब्स का. देन वी आल्सो हैव टेस्ला. टेस्ला इन अर्ली इयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, बट द आइडिया इवेंचुअली गॉट इट. एक और एग्जांपल है, यूट्यूब वाज फाउंडेड इन 2005. 2005 में जब यूट्यूब लॉन्च हुआ तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी लो थी एज कंपेयर टू टुडे. आज का भी नहीं, अगर हम 2015 का भी कंपेयर करें तो इंटरनेट स्पीड किसी के पास नहीं. इंडिया में तो काफ़ी कम लोग के पास. और कई एक्सपर्ट्स ने यूट्यूब का ये भी रिव्यू दिया है कि इट्स नॉट गोइंग टू मेक इट, और इट विल कंज्यूम टू मच इंटरनेट. पीपल, इट वोंट स्केल, but still it's a big idea. We all use YouTube. It's 2005. So our argument was, of course timing is a very important thing, but it's not completely necessary. It's not something if you don't go with the timing well, your idea won't be big, or you will fail, or you won't make your product onto the higher level. So any questions? No, you can continue after completing your time. नहीं, I have completed my. अच्छा ठीक है, हाँ. ठीक है, स्टॉप करते हैं. Team 1, the first team gets a chance to rebut whatever they heard. So. Okay. So my question is to you, सेफ कि तुमने टेस्ला के बारे में बताया, बट टेस्ला अल्टीमेटली फेमस क्यों है? यू टेल मी. टेस्ला अल्टीमेटली फेमस क्यों है, मतलब अल्टीमेटली उसको क्यों लोग जानते हैं? ये आइडिया बिग क्यों हुआ? टेस्ला वाई इट इज अ बिकम अ बिग ईवी के लिए, राइट? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, अग्री ना? ऑफ कोर्स. सो पहली बार जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई, बनी कब बनी? 90s में, राइट? ओके. हाँ, राइट, 90s में. लेकिन टेस्ला कब लॉन्च हुआ? डू यू नो? 2003. अच्छा, 1990 में इलेक्ट्रिक की बात हुई और 2003 में टेस्ला लॉन्च हुआ. ठीक है. टेस्ला को भी ईवी पे आने में बहुत टाइम लग गया. 2008 में नियर अबाउट उन्होंने फर्स्ट कार लॉन्च किया, मॉडल लॉन्च किए. अगर चाहते तो फिर 90s में ही उनको लाना था ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि टाइमिंग वाज द इम्पोर्टेंट. अगर वो उस समय इलेक्ट्रिक कार उस टाइम पे अगर वो लॉन्च करते तो उतना उसका सक्सेस नहीं होता. बट ड्यू टू दे वर लेट, आई वुड से दे वर नॉट लेट, दे वर ऑन द टाइम. उन्होंने ऑन टाइम किया, इसलिए
इसीलिए वो सक्सेस थी। you are telling me that 2003 was a correct time for Tesla to launch. No. I did not say. Tesla founded in 2003. ठीक है, तो Tesla founded in 2003, they went into हाँ, research, हाँ, and in वो 2008 they launched their first car. ठीक है. राइट। So 2008 was a best year to launch their idea, to launch their vehicle. नहीं, आई एम नॉट सेइंग, यू आर सेइंग ना कि आपने टेस्ला का एग्जांपल दिया है कि टेस्ला ने बिल्कुल नहीं, लाइक मैं कभी तो भी। नहीं देखो, मैं ये बोल रहा हूँ क्या 2008 was not a best time for Tesla to launch. हाँ, तो नाउ यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर थिंग। टाइमिंग मैं भी इम्पोर्टेंट है नहीं, ना। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट इज योर पॉइंट. You are हाँ, saying एंड me दिस इज that व्हाट। timing is necessary. I am saying that timing is not necessary. It's important, but it's not necessary. Product can survive even if you launch early or launch late. अच्छा, सो यू मीन टू से कि अगर मैंने बिना टाइमिंग के भी कोई सा प्रोडक्ट लॉन्च किया कोई या देखो, कंपनी अभी लॉन्च किया या देखो, आइडिया लॉन्च किया तो कोई सा वो। प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं. हाँ, ओके। Our point is it's important, but it's not completely necessary. क्या अगर कोई आइडिया टाइम पे लॉन्च होना ही नहीं, then it would fail. It would completely fail. टेस्ला राइट। launched it in 2008. ठीक है. आज हाँ, जाके in India there are electric vehicles started to see from after COVID. ठीक है. ओके। तो इंडियन ओके, मार्केट में अभी तक टेस्ला आया नहीं है. नहीं आ गया है और ना, किसने बोला इंडियन मार्केट में टेस्ला नहीं आया। आया है कि चलो आया है मार्केट में इंडिया में. हाँ, आया, डेफिनेटली आया। अच्छा ठीक है, तो टेस्ला आया है 2000, कब आया है 2024 या हाँ, 25? रिसेंट टाइम में आई वुड से। रीसेंट टाइम में. ठीक है. चलो स्विच करते हैं। लेट टीम टू rebut whatever it is heard from team one. Yeah. मेरा एक तो क्वेश्चन, अच्छा मैं बाद में पूछ सकता हूँ क्वेश्चन कि अभी बाद मेरा में, क्वेश्चन? अभी रुक जाए इंद्र जी। लेट ठीक। लेट निशांत, तुमने एक एग्जांपल दिया था क्या, दिस एग्जांपल सूट्स द टाइमिंग, क्या टाइमिंग वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए सर्टेन कंपनी, क्या कौन सी कंपनी थी? वेट, माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, उसके पहले कोई था. GPS, tablet, computers. इलेक्ट्रिक कार्स, राइट। थ्री एग्जांपल्स आई गिव। इलेक्ट्रिक कार्स. हम्म। खैर इलेक्ट्रिक कार्स तो मैं बोला हूँ टेस्ला. और हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर्स का, यस। इट्स व्हाट्स द बेस्ट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या नाउ लैपटॉप कंप्यूटर्स अगर यहाँ से 10 साल आगे होता तो इट वोंट मेक, पर नो, आई एम नॉट सेइंग, हम्म वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। आई एम हम्म सेइंग कि टेबलेट कंप्यूटर इनिशियली आ चुके थे 1990s में, राइट। आईपैड आया था, बट किसी को पता ही नहीं था एक्चुअल टाइम कब आया आईपैड के लिए। 2010 में जब इंटरनेट आ गया, सारी और फ्लेक्सिबिलिटीज आ गई, लोग नहीं नहीं दे नहीं, आर एबल टू। कौन बोला हाँ, क्या 2010 तक पता नहीं था किसी को? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 तक पता नहीं था, पता हाँ. था, बट हम्म. अल्टीमेटली सक्सेस कब हुआ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्या चीज सक्सेस? आईपैड्स और आईपैड्स के ही बोल रहा हूँ मैं। आईपैड्स एक्चुअली सक्सेस 1990 में नहीं आया आईपैड. टेबलेट और कंप्यूटर्स 1990s में आ गए थे, बट फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ इकोसिस्टम, देखो, राइट। बट कम सक्सीडेड इन आईपैड इन लाइक 2010 अराउंड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 2010 अराउंड, सो दे सर्वाइव द टाइम ना. और मेरे को कंप्यूटर्स 1990 में आए हैं और 2010 तक वेट किया है सक्सेस होने को, ये समझ नहीं पा रहा हूँ. जैसी लॉन्च हुआ है 1990s में, इवन बैक 1980s IBM PC, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. ठीक है. देन दे केम अप विद लैपटॉप्स और स्मॉलर वर्जन. 2010 तक वेट नहीं हुआ है क्या? 2010 आया है, देन पीपल आर स्टार्टेड टू नो अबाउट दिस लैपटॉप्स और कंप्यूटर. निशात, आई थिंक यू आर सेइंग अबाउट स्केलेबिलिटी. या एक्चुअली इसका टाइम, पहले PC 4 चलता था, PC 3 चलता था, फिर टैबलेट, लैपटॉप. So what चलता Nishant is था। saying is he's basic specifically talking about the tablet computers, not the entire PC or laptop.
Tablet computers. Tablet computers. What is tablet computers exactly? See, the pre-iPad era. Okay. Earlier, the first attempt was made of making the first tablet computer was in 1990s. It was also done by Apple. It was called the Newton Message Pad, right? It appeared late in the 1990s, but it gained success after iPad innovated more. After Apple innovated more things into iPad in 2010. If you see the sales numbers also, following the iPad release, the global tablet sales grew Okay, from let, 2 let us give million in 10 minutes. Let us give 10 minutes to the audience now. Okay. Anybody from the audience wants to talk about timing? जी जी। Hmm. निशान, तेरा एक पॉइंट था कि कोई भी आइडिया को आगे यानी अच्छा करने के लिए टाइमिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो टाइमिंग को बिगाड़ना, कोई भी अच्छे से अच्छे आइडिया को बिगाड़ना भी है ना, क्या उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो उसके कारण वो अगर फेल होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? नहीं मतलब आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। इंद्रजीत एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे मुझे। हाँ, एग्जाम्पल में दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे टाटा नैनो जब आया तो वो बंगाल में होने वाला था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण उसको गुजरात जाना पड़ा। दूसरा दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ कि टिकटॉक, ट्रम्प का जब ये इलेक्शन चालू था तो चाइना उसको प्रमोट कर रहा था। आज चाइना अमेरिका को टिकटॉक बेच रहा है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ जो बात करता है वो ट्रूथ पे बात करता है। तो क्या जो भी इतने आइडिया है उसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है टाइमिंग के बजाय? एक क्वेश्चन सिर्फ टाइमिंग से रिलेटेड है। अब हाँ क्वेश्चन टाइमिंग से रिलेटेड है तो थोड़ा इलैबोरेट करो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो हाँ, मैं समझ गया। इंटरफ्रेंस से हाँ वो आइडिया को फेल भी किया जाता है और बढ़ाया भी जाता है, तो इसके कारण क्या ये पॉलिटिकल ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है टाइमिंग से ज्यादा? नहीं पॉलिटिकल इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। नेटफ्लिक्स आपको मालूम है इंडिया में चलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स रशिया में नहीं चलता, नेटफ्लिक्स साइरिया में नहीं चलता, नेटफ्लिक्स चाइना में भी नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स बड़ा आइडिया नहीं है, ड्यू टू गवर्नमेंट इशूज। समझे जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हाँ, अगर आप नेटफ्लिक्स के एग्जांपल ले ले, टिकटॉक भी बहुत जगह बैन है। इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक छोटा आइडिया होगा, है बड़ा आइडिया। वो उसके पीछे तो पॉलिटिक्स है। हाँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, बट पॉलिटिक्स से फर्क क्या पड़ा? See, I एक think कंट्री में बैन हो सकता है, दो कंट्री में बैन हो सकता है, सब I जगह तो think बैन नहीं हो सकता ना। listen. I think TikTok is not an idea. The 30-second reel is an idea, right? बट ठीक है, चलो टिकटॉक का छोड़ देता हूँ। नेटफ्लिक्स से लेना आइडिया ना, नेटफ्लिक्स तो है। कुछ कंट्रीज में नेटफ्लिक्स नहीं हो रहा है, वो बैन OTT कर रखे हैं। platform is an idea, not only Netflix. नहीं बट जिसने नेटफ्लिक्स बनाया उसका आइडिया तो दिमाग में था ना कुछ, कि ये नेटफ्लिक्स में बना होगा। तो ये मेरे लिए एक आइडिया ही हुआ ना। Right. Initially, यू आर Netflix. यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैटेगराइज द थिंग कि नेटफ्लिक्स ओटीटी के अंदर आता है, बट आई अल्टीमेटली इट इज एन थिंक आई आइडिया। थिंक एक चीज हमको क्लियर कर लेनी चाहिए। आइडिया एंड कंपनी आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। ओके, आइडिया लाइक लाइट बल्ब इज एन आइडिया, राइट? Streaming movies on TV is an on internet is an idea, right? Netflix is not an idea. Netflix is a company. ओके Am I सो making बेसिकली यू आर sense? सेइंग कि Yeah. यू आर सेइंग कि नेटफ्लिक्स ने जब स्ट्रीम करना स्टार्ट किया, सो दैट वाज द पर्टिकुलर आइडिया, इट्स स्ट्रीमिंग ऑनलाइन वीडियोस। Right. That's an idea. ओके गॉट इट। But Netflix is just a company, right? I mean, success of a company and success of an idea are two totally different things, at least in my mind, right? I'm not trying to direct the debate. I'm just presenting my opinion. That's all. So, go ahead, guys. Continue. Yeah. तो ये इंद्रजीत जी के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए? ऑलराइट गाइस, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। I think हाँ, एक बात मैं मिस्टर बोल देता सिंह। हूँ बस, वो इंद्रजीत के पॉइंट से रिलेटेड। व्हाट इंद्रजीत वाज ट्राइंग टू से was that politics can destroy an idea, right? हाँ
हाँ I सर। I I don't agree with that. I think एक अच्छा idea, it always finds a way to get into the market one way or the other. No matter what be the market conditions, no matter what be the politics of the situation, some way or the other, it will always find a way to get into the market through one company, through company A, company B, company C. It does not matter which channel it uses, but finally it finds a ground. For example, one thought that always has crossed my mind is that, an idea is like a child. When it is born, everybody thinks, he's the parent of the idea and it's going to take care of him when he grows old. But as it grows older, it becomes like a teenager. It wants to hang out with other teenagers. It does not care about the founder. It does not care about the company it came from. It starts having its own life. So we should be thinking about ideas as separate from the parents of the idea. Okay? So in that context, I am saying कि a good idea will always find a way to get into the market. Go ahead, सिंह सर, आप कुछ बोलने वाले थे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे क्या होगा कि अपने सब ना एक पेज पे आ जाएंगे। और मैं इस फेवर में बोल रहा हूँ कि टाइमिंग मैटर करती है। ओके गाइस, सो जीरोधा और अभी जो चल रहा है ग्रो, ये दोनों नेटवर्क हैं जो अपने अपने क्या कहते हैं सबसे हाईएस्ट चल रहे हैं अभी इंडिया के अंदर। वी ऑल एग्री टू दैट, राइट? राइट। राइट, इससे पहले कितने सारे ब्रोकर थे, मोतीलाल ओसवाल और ये सब। सो इससे मेरे कहने का मतलब है टाइमिंग ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि जब इन्होंने कैपिटलाइज किया, इन्होंने अपनी एप्स लेकर आए ये दोनों, और इन्होंने जो माइंडसेट इनका था भी एक ट्रेडर माइंडसेट था और एक यंग माइंडसेट था। वो जो पहले वाले सोच रहे थे ब्रोकर हाउस, कब से वो मतलब मार्केट में थे, लेकिन फिर भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जो ये वेव आई, लॉकडाउन की वेव आई और लोगों के अंदर एक इंटरनेट आया सबके हाथ में और लोगों को ट्रेडिंग के बारे में एंथुजियाज्म बढ़ा, और इस चीज को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और जो नए बंदे आके कैपिटलाइज कर गए। और इससे मैं कह सकता हूँ भी अपने हमेशा टाइमिंग मैटर करती है, और टाइमिंग को कैपिटलाइज जिसने कर लिया उसी का आइडिया चलेगा। आइडिया सर ने बोला था आइडिया गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब, लेकिन आइडिया अपनी जगह ढूंढ लेता है। आई एग्री विद दैट। आइडिया स्टील हो सकता है, किसी ने स्टार्ट किया, हमने किसी का देख लिया, टाइमिंग उसकी नहीं मैच करी, और जब टाइमिंग आ गई और हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया, तो ये किया जा सकता है। सिमिलरली जो अब अपना जो काम चल रहा है, मतलब एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हम ट्रेडिंग करवाने का ऑफर कर रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। अभी एआई भी आ चुका है, लोग यूज टू हो चुके हैं, लोगों को पता है एआई एक ऐसी चीज है जो अपने आप सोच के और अपने आप एग्जीक्यूशन कर लेता है। तो दिस इज नाउ परफेक्ट टाइमिंग। सो यार, आइड से भी टाइमिंग मैटर करती है और एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आई आइडिया डोंट के लिए आइडिया जैसा मर्जी, आइडिया ऐसा बहुत बढ़िया आइडिया हो सकता है। किसी ने बात करी थी रील की, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन 2019 के अंदर मैंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे इंस्टाग्राम पे, तब रील्स आती नहीं थी, मैंने वीडियोस के एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो चली नहीं, मतलब उस पिक नहीं किया एल्गोरिदम में। लेकिन उसके एक एक डेढ़ साल बाद रील्स वाला आ गया और सब रील्स रील्स देख रहे थे। तो मेरे को वहां से ये मतलब ऐसा हमेशा मेरे को एक सेंस है कि हाँ भाई, टाइमिंग के साथ ही आइडिया मैच किया जाए और एग्जीक्यूशन किया जाए, तभी वो बिग होगा, वरना मतलब टाइमिंग सेट नहीं है तो फायदा नहीं है। तो आपकी जो एग्जाम, बोलो बोलो, सुमित बोलो। ये मेरा पॉइंट था इसके। आई एम सेइंग अबाउट जीरोधा एंड ग्रो। सिंह सर ने हाँ, बोला कि उन्होंने बेस्ट टाइमिंग पे अपनी कंपनी ओपन की, बट आई थिंक उन्होंने ब्रोकरेज कम किया था, राइट? ब्रोकरेज उन्होंने बहुत लो कर दिया था ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई और ब्रोकर लेट्स से 2005 या 2007 में भी ब्रोकरेज कम कर देता, मैक्सिमम ब्रोकरेज 20, मिनिमम ब्रोकरेज ₹2, ₹3, देन आई थिंक उस टाइम भी वो सक्सेसफुल हो जाती जितना जीरोधा और ग्रो है। तो आई उस डोंट टाइम थिंक इतने इट्स क्लाइंट्स ही नहीं थे भाई, इतने करने वाले नहीं थे उस टाइम। जो करता थे ना ट्रेडिंग, वो बड़े लोग थे और वो उनको ब्रोकरेज से फर्क नहीं पड़ रहा था, उनकी अमाउंट काफी अच्छी थी। अब जैसी 1920 ये जो लॉकडाउन आया, लोगों ने 10-10 हजार डाल के ट्रेडिंग चालू करी, तो उन्होंने इस चीज को ठीक है, कैपिटलाइज किया। ठीक है, राइट राइट, ओके 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 फाइन। अगर जीरोधा 2013 में ना आके 2018 में आती और 2018 में ब्रोकरेज कम करती, उस टाइम कस्टमर्स बढ़ जाते, राइट? उसके पहले कस्टमर नहीं बढ़ते बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज। कस्टमर थे ही नहीं भाई उससे पहले, उन्होंने यस, कैपिटलाइज किया कस्टमर बढ़ने पे, उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया भी अब कस्टमर बढ़ चुके हैं, नैरेटिव बिल्ड हो चुका है, सी ट्रेडिंग सी सी सबको सी पता सी चल गया है। नाउ यूर इसलिए सेइंग राइट। उनके आइडिया लाने की वजह से कस्टमर बढ़े हैं, ना कि उस टाइमिंग पे वो आइडिया लाए कि कस्टमर आ गए थे फिर वो आइडिया लेकर आए। वो आइडिया लेकर आए इसलिए कस्टमर बढ़े। नहीं नहीं, कस्टमर आइडेंटिफाई किए यार उन्होंने, कस्टमर तो तो देखो वही तो ना, ये ऑफलाइन आइडेंटिफाई। मार्केट में,
जो बंदा निखिल कामत जो Hold उनका है, on, guys, hold on. Let's get some facts right. Zerodha started in 2014. By 2015, it had 2000 customers. यस, तो इनका सर उस पे By 2018, जहां तक दूसरे brokers का सवाल है, they were just slow. They could have done the same thing Zerodha did in 2015, 2016, 2017, 2018. They were just slow. It was not about timing. They were just not ready to adapt. They just did not take the time. They could have easily taken the 4 5 years and built something interesting. They just were too slow. It is less about, especially in this example, right? I mean, definitely timing is important, no doubt about that. But I think specifically in this example, it was less about timing. It is just more about Adaptability. the innovative company having enough time to prepare and to get ready for the, basically, in a different way, what I'm saying is that timing favors the innovators. It is not that innovation, that timing decides who the innovator is. It's just that the innovator is always ready for the right time. That's my feeling. An innovator, it's always like, saying that success comes to the brave, like luck favors the brave. It is almost something like that, that it always appears that the good innovator always appears like he's having the right timing, but actually he builds his own timing by making sure he's building the right kind of products. So just बट वन recall. मोर थिंग बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से सर इन दैट केस कि अगर हम लोग जेरोदा की बात करें, सो बेसिकली जेरोदा या जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है ये फेमस इसीलिए भी है, एक तो ब्रोकरेज पार्ट तो है ही सही, प्लस दे आर प्रोवाइडिंग द अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी ऑनलाइन, राइट? यू नीड नॉट टू विजिट दी जेरोदा ऑफिस या फिर ग्रो ऑफिस के, आपको ऑफिस नहीं जाने का है, आपको खुद से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। एंड इफ वी रिमेंबर, तो ये जो ई केवाईसी वाला जो फंक्शन था इंडिया में लॉन्च कब हुआ, ये आया 2013, जैसा कि जेरोदा बोला 2014। तो ये इसने टाइमिंग पिक किया सर। 2013 में ई केवाईसी आया कि आपको जरूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी से आपको वेरीफाई करना है, ई केवाईसी के थ्रू भी आप अपना केवाईसी कर सकते हो। बट See, अदर लेकिन अदर ब्रोकर अदर here the question really is whether the Zerodha succeed because it picked up on that and others did not pick up. Actually, others just did not pay attention to it. They could have also picked up in 2013, 2014. It does not take too much to build an app. It's just that others just did not pay attention to it. See, actual market तो start हुआ 2019 में ना, या राइट राइट ड्यूरिंग right? कोरोना टाइम्स मान सकते हैं कोरोना ऐसे। टाइम में सब मेजर मूवमेंट हुआ. यस, But the guys who were not ready for the corona times failed, right? राइट And the reason बट they were not ready was because they did not think innovatively. If they had ample time to think innovatively, right? I'll give you another example. जब rubber tires आए in the market, before that there used to be metal tires. This is like 1940s I'm talking about, 1930s or 1940s. उससे पहले metal tires आते थे. After the rubber tires came into the market, the metal tire companies continued to manufacture metal tires because they felt कि भैया metal जो cars metal tires पे हो तो metal tires चलेगी ही, right? They did not switch from metal tires to rubber tires. They had 4 5 years to do that. All the companies that were selling metal tires finally failed because the rubber tires finally caught on, right? They had ample time to deal with the timing issue. They just did not switch. तो Is that इवेंचुअली example making sense? पॉइंट Yeah. तो पॉइंट तो ये है ना, टाइमिंग मैटर करती है, फिर यही कहा जा सकता है इस चीज पे। टाइमिंग मैटर करती है उन लोगों के लिए अगर जो टाइम को समझते हैं, जो समझने या को ही तैयार नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई भी टाइमिंग आए, कोई भी मार्केट चेंज आए, वो अपनी दुनिया में घूमता रहता है, या दैट इज ट्रू। राइट? Market gives you ample time to adapt, but if you refuse to adapt, then the market can't help you. So, सर एक वन लास्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर, इसको बहुत जनरल जनरल इसको होल्ड नॉर्मल। करो, इस एग्जांपल को होल्ड करो, अपन काफी टाइम बिता चुके हैं. लेट अस ओके डू द ओके थर्ड क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट वील हैव एम्पल टाइम टू डिस्कस फर्दर. ठीक है? ओके श्योर श्योर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो. हाँ सर, लेट मी शेयर दिस। हम्म.
screen is visible to everyone? Yes, Yeah, yes. yeah. So guys, the third question is that can the potential of an idea be estimated early, or is it just a matter of luck? So here our answer is absolutely no. Most ideas, see, cannot be judged correctly at inception. Early evaluation of ideas are unreliable because of three reasons. There may be more reasons, but as of now, I've listed three reasons. Is that there are too many unknown things which are not clear right at the inception, like the social acceptance or the tech maturity and the cost, which are linked to the idea. Second is some ideas might appear useless until it is combined with other great ideas. Next is it is not about luck, but the emergence. This can only be hindsight, which can reveal the real potential. See, for example, laser was invented in 1960s. Initially dismissed as a solution which was looking for a problem, but it only became big when it was combined with other ideas like optics, electronics, telecoms, medicine, etc., which is used in surgeries, fiber optics. Next example is the GUI, the graphical user interface, which was invented at Xerox PARC, but without the personal computers at our homes, it was seen as an overkill. So when it was combined with Apple GUI plus affordable PCs, it became revolutionary in the context of computing. Next is example of QR codes. We all know how QR codes are an essential part of our lives. हम लोग कुछ भी payment करना होता है, we just scan the QR code and the payment is done. But it was founded in 1990s, where it was only used in Japanese warehouses, where QR codes was recognized as a niche product. But now, as I said earlier, ki how QR codes are the integral part of our daily life. Next is the touchscreen technology. We all know how now I am sure that 95% audience in the 95% of the people in the audience have touchscreen mobiles. Now it is very common, right? But when it was invented in 1970s, it was very bulky and it was very limited. So people did not find it really useful. So basically, when it was combined with other technologies or other ideas, it became a useful activity. Now I would like to take you to a study where Thomas Alva Edison, before inventing the bulb, he was working on 3,000 different theories to develop the innovation of the lamp, where the lamp made light using a very thin strip of material, which we call the filament. And until it was hot enough, even after it was hot enough, it would glow. So after reading the entire article, I'll also link send the article in the chat box, where he have said that I have not failed like 100 times or 10,000 times. I have just found out 10,000 ways that won't work. So this simply supports my answer that the potential of an idea can never be estimated early on. We don't know कि हमने जो idea start किया है या हमको जो idea आया है, that has the potential to become a big idea. If the idea has the capacity to combine with other ideas, then the small idea has the potential to become a big idea. Yeah, so this was my point. Okay. Yeah. 1 more minute left for Should we begin? Sure, go ahead. Okay. Shadab. So as the question is, can the potential of an idea be estimated early, or is it just a matter of luck? Our objective here is, submission here is, yes, it can be estimated early on. It's not pure luck. Easy metrics like retention and growth give clear signals. Now, there are many VCs in Silicon Valley or even here in India that has certain quantitative models or scoring frameworks that can check whether your idea
can be scaled to user, and whether this audience can react, and whether this small idea can be a big idea. So we call this as quantitative models and scoring frameworks. After that, we have concept testing and customer feedback. Let's talk about example that we all know, STM. क्या now we make हम लोग एक STM की शीट बनाए, और इन नागपुर यहाँ पे काफी ब्रोकर्स हैं, इंद्रजीत जी और जावेद सर ब्रोकर्स को जाके बताते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे वी सी ए वेरी नाइस रिएक्शन टू दिस एक्सेल शीट, क्या यार एक्स्ट्रा कैश बन गया, तो बढ़िया है, ये बिल्कुल हमारा ब्रोकरेज बनेगा, देर देर इज गोइंग टू बी ए बाय एंड सेल ऑर्डर आफ्टर एवरी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, कस्टमर खुश हम खुश. So this is what gives us a very strong potential for this idea, that of course this idea is going to be a big idea. और इसमें हमने क्या किया है, कस्टमर फीडबैक लिया है, वी टेल दिस आइडिया टू कस्टमर्स, वी क्रिएट ए MVP, वी चेक आर आइडिया क्या whether it's really helpful to user, whether it's going to be big. And since the early stage, we can see that potential of this idea can be a huge thing or not. Now then, we also have easy metrics and traction indicators. Easy traction is we can create a website and put our idea into this and see how many users did we retain in a following period, often strongly correlate with eventual scale, especially in tech startups. Then we have founder fit research. Now this is a research paper that you can see with the link. The paper founder ChatGPT self-help to evaluate the founder idea. Fit suggests that the element between founder's background, capability, and the idea can be algorithmically evaluated to give early signals of success likely. So these are few professors that they research that during the early stage of a startup or an idea, we can check the idea algorithmically and evaluate to give early signals of the success of this idea. So moving further example. So we have an example of Dropbox. Dropbox was a demo video posted on Hacker News. Their waitlist jumped from 5,000 to 75,000 users. So eventually, this was very early stage. They were just creating an MVP model, and their idea was just to upload a video. No one thought it would be a bigger idea, but when they in initial months they found out that this is going to be a big idea, and then of course they raise funding, and now we all know what Dropbox is. It scaled massively with no paid ads initially. Early signals predicted potential. That's it. That's our point. Okay. So, yeah, so Sumit, can I ask the question? Yeah, of course. Yeah. So as you said on the mentioned in the first slide that you Mhm. were saying that people in the Silicon Valley use quantitative models and scoring frameworks to evaluate the Yeah. potential of the Yes, but right. if you will argue that every single investor in Silicon Valley, that every single investor does not use this. There are things that they use algorithmically to evaluate your idea and test using bad data whether this idea can be a big idea. I absolutely agree with you. Yes. All right. Mhm. Now my question, I have just 2 points. First point is that they rely on historical data. Do you agree with Yes. me? Yes. Right. So models can only evaluate based on patterns from the past. Mhm. But big ideas from our definition are disruptive and they often break from the past trends. Right. I'll mention a very simple example, like no scoring framework in the 1990s, like would have predicted that a college networking website like let's say Facebook would scale into global communications and advertisement giant. Second point is that data does not mean certainty. See,
I'll show you one data where it shows that 75% of the VC backup startups still fail. If the framework truly estimated the early potential of each idea or each startup, the failure rate would not be so high. Of course, there are certain parameters or certain reasons why these startups or ideas fail. But as VC firms also use dozens of frameworks like TAM, SAM, or SOM models, like they are used to scorecards for the team, the market, the product. Yet 75% of the VC startups fail. So my only point is that not everything which has been relied on the historical data cannot tell you the potential of the idea. Okay. So, Abhinav, your second question was that 75% of the startups fail. VC backup startup. VC backup startup fails using this estimated early potential, right? Right. Using certain machine learning or certain algorithms. Yeah. Now, do you have a data about how many VC-backed startups actually fail, regardless of whether it has an early startup or early potential using a certain algorithm? Just a normal judgment. Wait. I just happen to have the image with me. Have we stepped into the rebut part already? I think so. We have, right? Yeah, we have. Yes. Good. Yeah, I'm just pulling up the data which I have. Just give me 1 minute. Okay. Let me know when my screen is visible. Is my screen visible? Yes, visible again. Yeah. So Saif, as I was mentioning, you were asking that what is the data which suggests that how 75% of the startups fail? No. My question was, you told that 75% of startups that was shown that early potential is there by certain algorithm failed. Right. So और the, मैं understood your question. You are saying that वो 75% startups जो जिनमें अर्ली पोटेंशियल था वो फेल हुए, उसका कुछ एविडेंस है, उसका कुछ सपोर्टिंग डेटा है या नहीं, राइट? नहीं वो 75% है, मैं मान गया क्या 75% ठीक फेल है। होता है, बट जनरली कितना फेल होता है, मतलब हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैव बीन बैक्ड एंड हाउ मेनी फेल? About What 90% percentage? of the startups fail. Because Right. see, my point is Hmm. कि जो 75% जो startups fail हुए, despite having initial financial support from the VCs. अब VCs, they are not mad. They would be investing in an early startup or let's say in a mid startup after Right. evaluating certain things. No, even after, you are telling me that 90% of them failed, but even after finding this potential, only 75% of the startups fail. Okay, the product development team is supposed to rebut now. So Should we ask the question? sure, Yes. go ahead. It's your time now, Saif. Okay. Now, Abhinav, you told us an example of an idea that cannot be estimated early on. Yes. वो कुछ एग्जाम्पल था, मैं बोल रहा हूँ. I guess Thomas Alva Edison he's talking about. नहीं, उसकी पहली स्लाइड जो थी ना,
lasers, Geo GUI, QR codes, touchscreen technology. हाँ, तो you are just touch phones में you are just telling about the timing. You don't have a proper infrastructure at 1970s to give a touchscreen phone, but you have the same infrastructure at 2010. Okay. और भी जितने points है, you are just telling about the timing. क्या certain things does not work in 1980s, but it works in 2010. तो क्वेश्चन क्या है? It's not मतलब जो potential है, तो इसमें ये नहीं है क्या potential cannot be seen early on. इसमें हम जो सेकंड वाला जो पॉइंट है टाइमिंग का, क्या टाइमिंग इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट बट नॉट नेसेसरी. तो इट्स नॉट क्या हम यहाँ पे इवेलुएट हुआ क्या 1970s में स्मार्टफोन और टच स्क्रीन डज नॉट हैव पोटेंशियल. इट डज नॉट वर्क इन 1970s बट इट डज इन 2010. यहाँ पे पोटेंशियल वाली बात क्या हो गई है कि उसमें पोटेंशियल नहीं था और ये आइडिया कभी दिस स्मॉल आइडिया कैन नॉट बी ए बिग आइडिया. नहीं, if you think closely, हम्म. मुझे अगर आज कुछ आइडिया आता है जिसका Okay, I think we should give time to the audience now. Okay. Go ahead. Anybody in the audience wants to talk about luck? Bolo, Abhinav, you guys can continue also if nobody is talking from the audience. You can continue. Yeah, so as I was answering you, Saif, that if you think of an idea today as of 2025, let's say you want to go to moon every now and then. मुझे साल में 2 बार चांद पे जाना है. Is it really possible as of now? Does the No, it's idea not. have the potential? It's not, right? नहीं देखो, it has a potential, but I don't have infrastructure to travel to moon every now and then. ठीक है, But of who course knows it's after 10 years now you have the infrastructure. नहीं वो I don't have any idea कि infrastructure is going to be there in after 10 years or after 100 years, but the idea has a potential ना. क्या you don't think that idea does not have a potential? No, but Traveling how to do you know moon. the potential of an idea where you don't have the infrastructure as of now? You don't have the user habits. The users are not ready for that. You know the high cost, low scalability. Like production में इतना cost जाता है. I'm just talking about the touchscreen वाला example. Right? तुम्हारा idea तुमको आ जाए. इसका potential कितना है, कितना नहीं है, हमको नहीं पता. ये हम किस चीज को आइडिया बोल रहे हैं? लेट्स जस्ट फर्स्ट बी क्लियर. किस चीज को हम आइडिया बोल रहे हैं इस केस में? In this case, we are just using the example, one of the examples which I used of touchscreen technology. So Saif is asking the question. टेक्नोलॉजी को आइडिया बोल रहे हैं. टच No, स्क्रीन he's फोन्स. हाँ, टच स्क्रीन फोन को आइडिया बोल रहा है सर. टच स्क्रीन फोन को आइडिया बोल रहा. अच्छा, हाँ, ओके, हाँ. ठीक है. तो अभी इस आइडिया का क्या, कहाँ पहुंचे इस आइडिया? So I'm saying कि जब ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का आइडिया आया, then nobody knew what is the exact potential of this idea. It was only after years when there was proper infrastructure, people were used to the keyboards and the stylus and buttons, and eventually how the cost went low and the scalability went high. नहीं अभिनव, यू आर टेलिंग अस क्या पोटेंशियल इज द सक्सेस ऑफ आइडिया. कोई आइडिया इज सक्सेसफुल तो यू कैन से दैट आइडिया हैड ए गुड पोटेंशियल. ओके, नहीं, मैं क्विकली थोड़ा डायरेक्शन देता हूँ. टच स्क्रीन इज द आइडिया, राइट? right. But after that, it resulted in many different ideas related to that idea, right? Exactly. Yeah. So when these other ideas sprung up from the idea of touchscreen, that's when touchscreen became a big idea. Right. When it was combined with other ideas. Right. Or other ideas could sit on top of the idea of touchscreen. The small idea. Yeah. That's when touchscreen became a big idea. Exactly. Yes. Right. Okay.
तो अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, लक कहाँ से आ गया इसमें? So what Saif is asking is that when the touchscreen technology was invented, he is saying that it had a huge potential, or it had some potential that can be estimated its early success. This is what you were asking, Saif. Early, we can estimate it early that it has a successful, it's going to be a successful idea. That is exactly my point. ना तुम हाँ कैसे हाँ उसकी अर्ली एस्टिमेट तुम कर ही नहीं सकते, because using the small नहीं, idea, देखो no. देखो Abhinav, you are telling me क्या, if this idea is going to be a big idea, then I can only tell क्या it has a high potential. What I think 97. what Saif is trying to say is that in case of some ideas, you can guess right away that this is going to be a big idea because it's going to spring up a lot of ideas. Right. And in case of touchscreen, I tend to agree कि मतलब touchscreen आएगा तो उससे बहुत सारे आइडियाज आएंगे, ये सबको प्रॉबेबली ये ऑलरेडी। और अभिनव ने अभी एक और बात की थी कि मून आना जाना अगर हर दिन रहा, सो ये भी एक बेसिक आइडिया है. इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट इट कैन आल्सो स्प्रिंग डिफरेंट ऑफ आइडियाज. अगर हम लोग मून जा सकते हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन गो टू मार्स, देन सर्टेन अदर प्लैनेट, एंड ऑफ कोर्स बाय वन आइडिया लीड्स टू अनदर, इट इवॉल्व. नहीं, बट आई मीन कनेक्टिंग मून, गोइंग टू द मून टू गोइंग टू मार्स is it's just a dream. The challenges of going to moon and challenges going to Mars are very, very different, right? Yes, agree. And to say that one idea led to the other idea, it is like saying कि, the first time a movie was made, it was already known that Sholay will be made, right? So yeah, Nobody, yeah. The leap forward is too big to go from going to the moon to going to Mars. It's a big leap, right? One is talking about going, like, going from Earth to moon. Probably, I don't know exactly how much time it takes, but my guess is probably less than 24 hours. But going to Mars is like 5 to 7 months, right? नो सर, अभिनव का ये कहना था क्या, व्हाट इफ हम लोग एक दिन में आना जाना कर सके, हर दिन मैं मून आऊं और जाऊं, हम्म। तो तो मतलब गिवन, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्या, गिवन द स्पीड to travel from Earth to Moon has been exponentially increased. So, abhi, now given the infrastructure to back this idea, I can also travel from Earth to Mars in 2 or 3 days. I doubt it. I doubt it. The challenges are totally different. Huh? The challenges are totally like, I mean, the thing is, for example, my guess is that for you to travel in 2 to 3 days, the speed of the aircraft would have to be increased at least 30 times. Agree, right. That is a big leap. Increasing the speed of the aircraft by 30 times is a big leap, right? And even though, sir, like we can say we can travel to moon, but we cannot say on the behalf of this idea कि हम लोग हर पर्टिकुलर स्टार या प्लेनेट को विजिट कर सकते हैं या जा सकते हैं, आ सकते Hey, I'm saying forget the other planets. I'm saying even going to Mars is a totally different idea. It is not comparable to the idea of going to the moon, हैं. right? There's a lot of different technological leaps required to go from the first idea to the second idea. I think it is totally different idea. It is not the same idea altogether. Am I making sense? Not making sense? So basically, you are saying कि both are the two different ideas. Totally Visiting the different moon. ideas. Yeah. Okay.
I mean, technology wise, the problems you have to solve to go to Mars are very different from the problems you have to solve to go to the moon, right? Right. 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 I mean, for a human being to survive in space for 5 to 7 months itself is a big leap, Yes. Right. right? So, ठीक है। I mean, और किसी का कोई पॉइंट? इंद्रजीत कुछ बोले नहीं इस बार? नहीं सर, अभी तो मुझे कोई एक और? एक 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 एक, एक ऐसा क्वेश्चन पूछना था कि हाँ। जैसे वो लोग बोलते हैं कि ये आदमी ने जिस बिजनेस में हाथ डाला वो बिजनेस चल जाता है। जैसे कुछ साल पहले अपना ये विजय माल्या के बारे में लोग बोलते थे, ओके, लेकिन बाद में तो कुछ और ही निकला वो। राइट। तो क्या वो लक जो बोल रहे हो, क्या इज इट एनी वो है या फिर ऐसी दिखावा है? वो तो we are in a way we are talking. See, none of, I'm guessing, apart from his alcohol idea, all the others were essentially failures. Right, buying an F1 car company, airlines. हाँ, एयरलाइंस तो फेल किया ना। Yeah, also this Yes. this one, Force India. Right. Anyway, I mean, again, Indrajit, help me understand what is your point. एक मिनट। You are saying कि luck वर्क किया उसके लिए या नहीं वर्क किया? फर्स्टली लेट्स जस्ट बी क्लियर ऑन सर दैट। नहीं, जैसे विजय माल्या के बारे में जैसे पहले बोल दिया गया था कि जैसे उसने एविएशन में हाथ डाला तो एविएशन इंडस्ट्री बढ़ गई। तो इस प्रकार से मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन को मुझे बोलना नहीं है, तुम्हारी लेकिन वो आवाज ठीक से नहीं आ रही, बताओ फिर से क्या बोल रहे हो? जैसे आज से समझ 2007 2006 एक एक हम्म। ये एक ये था कि जैसे विजय माल्या ने जिस भी बिजनेस में हाथ डाला वो बिजनेस बढ़ गया। नहीं, बट हम गलत एग्जांपल ले रहे हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज एक्चुअली बीन सक्सेसफुल। हाँ ये तो कोई सक्सेस ही नहीं है ना। मुकेश अंबानी का समझ एग्जांपल गए। तो कोई बात है। हाँ ये तो हम गलत एग्जांपल लेके गलत चीज के पीछे बहस कर रहे हैं। But I think we are discussing about ideas and Indrajit saying about businesses. That's a two different thing, I So, think. so can I ask one question? Hello? Yes, Yes. yes, Yes. ma'am. Yes. Yes. So I was just trying to ask if all this like can be summarized as an idea can a small idea can grow big only if you time everything is related to the either the need, discovering the need or creating the need for the people. It all depends on that. Either you have to create the need for that particular product or whatever you are going to deliver, or you have to discover a certain need. I'll give you even an even better definition. You have Okay. to capture the imagination of the customer, right? Yeah, yeah. Let me put it even more simply. जब प्लेन्स नहीं थे तब भी लोग ट्रैवल करते थे, Right. Hmm. राइट? जब जब हमारे पास कोविड का वैक्सीन नहीं था तो भी काम चलता था, Hmm. राइट? जब हमारे पास टीवी नहीं था तो रेडियो था, स्क्रीन काम तो फोन Right. चल नहीं रहा थे था तो ना। नॉर्मल फोन थे, यस सर। नॉर्मल फोन या स्मार्टफोन से पहले नॉर्मल फोन था, काम तो चल रहा था ना। Hmm. It is just that all these ideas captured the imagination of the customer, Hmm. right? Hmm. So if you can capture the imagination of the customer, then every idea can become. But the point is now we are beginning to talk about successful versus unsuccessful ideas, right? Our bigger question is small idea versus big idea. We are talking about within the space of successful ideas, there are small ideas and big ideas, right? Our focus is on the space of successful ideas.
By success, I don't mean commercially successful. I mean a successful idea is an idea that delivers on the promise it makes. Chalo, last question kare because this debate is very close in terms of points. So I think the last question is required. Fourth question ho jaye jara. बताओ कौन सा है फोर्थ क्वेश्चन निशान? Sir, I am sharing the screen. So over here, like the fourth question is, does an idea need to be unique to become big? Right. Hello, hello. Am I audible? Yeah, Yes, yeah, yes. you're audible. Okay, okay. So moving forward, so definitely, I am supporting this, that yes, belonging to a strategy isn't enough. See, uniqueness spark innovation while generic ideas stay. Without uniqueness, it's just a repetition. It doesn't generate new conversation or applications. So before moving forward, I would like to talk about the STM that everybody knows about in the other algorithm trading platform out there in the market, right? Everybody is talking about the strategy, trend following, blah, 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 mean reversion and all that things, technical indicator, price action and all that things. But all the algorithm trading platform are similar. They are ultimately trying to predict the market, right? They are trying to predict the market plus using the same tools out there like technical use कर रहे हैं या फिर कुछ भी एक particular fundamental use कर रहे हैं, price action use कर रहे हैं, time frame. Overall, they are dependent on the technical analysis. But as far as the STM is concerned, right? अगर मैं STM की बात करूँ स्ट्रेस ट्रेडिंग मेथड की, so the idea is unique. What is the unique in between STM is the extra cash. क्योंकि हमारा जो STM है वो एक यूनिक चीज प्रोवाइड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडर को. तो दैट्स व्हाट इट मेक्स अ बिग आइडिया इंस्टेड ऑफ, क्योंकि सी अगर अगर अल्गोरिदम लाना ही एक बड़ा आइडिया होता तो सारे सारे अल्गोरिदम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बड़े होते, सारे बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होते. बट यूनिकनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसके अंदर यूनिकनेस है किस चीज का? एक्स्ट्रा कैश का. एंड इट डेफिनेटली व्हाट इट मेक्स अ big idea. As soon as the things will goes continuously, definitely STM is a big idea in the upcoming time or future time of, I would say. Now say let the Pythagoras theorem, we everybody heard about that part as well कि सब लोगों ने सुना है कि Pythagoras theorem का क्या था, इस 10th standard में पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने. So it is a unique in its time because became fundamental across geometry, architecture, navigation and physics, sparked centuries of further mathematical development. So that what it makes unique. हर पर्टिकुलर आइडिया में एक यूनिकनेस होना, तो वो हेल्प करता है उस पर्टिकुलर आइडिया को कि वो बहुत बड़ा आइडिया बन जाए. And the GPS also the same thing, because earlier GPS was using for a single thing, but later on because of the uniqueness providing continuously that global positioning, applications, navigations, agriculture, logistics, finance, defense, personal finance. So all these are things very important. जैसे अगर मैं बहुत सारी एक सिंपल लॉजिक की बात करूँ, अर्लियर जब नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आइडिया दिमाग में लाया कि हम लोगों को डीवीडी से या सीडी से शिफ्ट होकर के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करना चाहिए, दैट वाज द आइडिया. बट एज सुन एज दे थॉट कि इसमें यूनिकनेस क्या है, तो दे टॉक्ड अबाउट अ डिफरेंट सिनेरियोज. उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया. आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अर्लियर वी वर टॉक्ड अबाउट कि सीडीज हम लोग रेंट पे लेते थे, डीवीडीज रेंट पे लेते थे. तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल तो रखा, बट यूनिकनेस क्या आ गई थी कि उनका आइडिया इस पर्टिकुलर यूनिकनेस पे था कि जहां पर आपको पर्टिकुलर चीज को लेने जाना पड़ रहा है कि यू हैव टू विजिट द स्टोर टू बाय दोस सीडीज एंड डीवीडीज ऑल दैट थिंग्स, नाउ यू कैन एक्सेस ऑन दोस इंटरनेट, sorry, on the your laptop or your phone by visiting the particular website.
So that what it makes as an uniqueness. That is what it is the unique in this idea. So like that is what it all about the एक uniqueness क्यों जरूरी है. So that is what my point. I ended up with this. Over to you, Seth. I have completed my points. Okay, okay. Okay, Nishant. Yes. So, slide. Does an idea needs to be unique to become big, or all that matters? It belongs to a specific industry. Now, I will focus more on this second part. That all that matter is that it should belong to a specific industry. And of course, the idea does not need to be unique. I'll start with an example. Next slide. So we have an previous slide. We have an idea about sharing your food items from your store to at your doorsteps. Now, this idea was initially came up from Zomato or Swiggy. You want to get a restaurant cooked food at your doorstep, so you can just order it. This was a basic idea that you can order certain items from your outdoor at your doorsteps. Initially, it started from Amazon. Amazon came up with this idea. Started from books, then they switched to all the items. Then Zomato or Swiggy took this, or Uber Eats took this idea to food items. And now we can see that this idea has been replicated to our grocery items by using Blinkit, Big Basket, or Swiggy, Instamart, etc. So our submission here is many companies succeed by improving existing products. Your idea does not always need to be unique. For example, many consumer electronics succeed by a better execution, cost reduction, packaging, distribution, not unique inventions, just making your execution process cost reduction. Me Too success is in proper domains. Many startups replicate successful business models from other geographies. Say we have an app idea in US, we copy it in India. Uber was initially in US, then Ola guys replicated same idea in India. Then we have Uber Eats in US. Zomato was copied in this industry or different geography. Then we have industry tailwinds, often more important. If an idea is in fast growing or high opportunity industry, even moderate differentiation may suffix. You write the industry's growth. So we have different LLMs in market, such as ChatGPT. You put this idea, you add a little bit more to this idea, and you make a different model. Suppose you can create a video from this LLMs, just like Gemini has copied this idea. Just by adding something to this idea, you can make a small thing into a big idea. Sustaining differentiation rather than initial uniqueness. What matters more in the ability to sustain competitive advantage, not necessary initial uniqueness. There is, of course, a advantage in competition as well. Now, moving to the example side, we have one example here. Google entered a market that already had search engines. And of course, there were Yahoo initially, which came up with the search engine. It was an initial idea. But Google success was much better because of better execution, better ranking algorithms, and a clean UI, not absolute novelty. You can refer many histories of Google. So this is our point here that not all idea needs to be unique. You can just, it also depends on industry. Now, one more example, that printing press is another example of how an idea does not need to be unique to be big. The practice of copying text had existed centuries through scribes and woodblock.
So there were initially people used to write on stones in Mesopotamia or Egypt. Then this was initial idea. Just to reach a certain thing, you need to write it. Practice of copying text. There was also practice of copying text initially in China. Then using this idea, they came up with printing press, and hence we all know printing press is a big idea, and it was not unique, but they just add a little bit flavor to this idea, and printing press is now a big idea. That's it. That's our point. So if my question is that can execution being a part of the process, can the execution process can make the entire idea unique? Or is it just the idea that has to be unique and the execution is just a part of the entire process? Execution needs to be unique. क्या मैं समझा नहीं? Can you repeat? ये अपना क्वेश्चन ये है कि does an idea need to be unique to become big? Yes. Right. You said mentioned examples of इसका एग्जांपल लिया था Different geographies, like मैंने example लिया था Uber, Swiggy, Blinkit. Hello. Yeah. Right. So what my point is कि जो the flavor or the how accurately certain companies do their execution, can be counted as the unique in their uniqueness, or is it just the idea that has to be unique and the execution follows? See, the execution also matters. If you came up with an idea in US में आपको एक idea है, and you try to implement this same idea in Indian market, it might fail. So your execution has to be different as compared to different geography or even different industry. यहाँ पे second point है कि does all that matter is that it belongs to a specific industry. So you can use same idea in different industry and make a small idea big idea. Does this answer my question or कुछ गलत समझा? नहीं, I understood what you're answering. My point is that uniqueness always sparks innovation. Right. Agar let's say now we all have been working closely in the stock market industry, we all know that how differently or how mainstream the ideas of certain brokers are. उन सबका एक ही वो होता है कि उनको बस क्लाइंट से उनको कितना ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है. ठीक है. Now, if taking that into consideration, if you decide to open a brokerage house, or you become or try to become a broker, do you think any uniqueness is important, or you will just follow the same principles or the same goals which other brokers are following? See, if I am following the brokerage part, ठीक है, suppose Zerodha follows a certain pattern and I want to implement this pattern. So I need to add a little bit flavor in this and also a different geolocation. What flavor? So we are at the last rebuttal. It will be done by Saif. He gets 3 minutes to rebut points made by Abhinav's team. Yeah. तो अभिनव, जैसे मैंने बोला प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया है. प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया ये है क्या, वी नीड सर्टेन थिंग टू कॉपी टेक्स्ट. ठीक है. तो इनिशियली ये आइडिया चाइना में था क्या, पीपल यूज टू राइट दिस ऑन वुडन स्लेट्स. ठीक है. Now they use this idea, they add a flavor, and they started printing this through a printing press or through a machine. Do you consider this both idea as a unique idea, or it's the same idea with a little bit of flavor or a different timing or geolocation? See, I did not understand the context of the example. No, my question is, what do you consider an idea is a unique idea?
My personal definition is that अगर कोई भी industry is, let's say there are more than 10 players, or let's say 5 players also. If a normal person has to distinguish between me and the other 5 players, then there has to be one USP or one uniqueness that will attract or that will keep my company or my product's name into the heads of the customer. That is what I mean by uniqueness. No, If see, you. I'll tell you, I'll tell you a very simple example. What makes Dozen Diamonds unique is that we are continuously improving the strategies in the cash market. Everybody in the algorithm space industry or the broker industry are only attracted towards the derivative segment. We are only the first company who has, come up with an automated strategy for the cash market. नहीं तो इसमें देखो, if your idea is unique, ठीक है, मान लिया कि you have a very unique idea, Yeah. so it does not necessarily going to be big. You might be generating extra cash, you might be working in cash markets और दूसरे लोग नहीं work कर रहे, but that does not mean कि आपका idea is going to be big. ठीक है, you are I think you are the submission is that if your idea is unique, it's going to be big, right? Yes. Abhi, Saif, let me give one more example to you for Nishan, just this one thing. second. I just want to make one point, then you can take over. See, Saif, Okay. the only reason why we have not been able to become a big idea in terms of STM is because we 35 people have failed to generate new thoughts and new ideas beyond STM. We have not been able to generate new ideas based on STM in our own trading strategies or in our own way for our own purpose. That is the reason why we have not been able to become a big idea. So you are telling that idea needs to be unique, but also there has to be innovation to that idea, continuously innovation. So only after that, an idea is going to be big. सिर्फ uniqueness के ऊपर आपको थोड़ा और flavor, थोड़ा और certain thoughts, certain big ideas, futures and option. ठीक है, रिलीज ओपन करते हैं ऑडियंस को. Anyway, uniqueness requires more in-depth understanding and more input from the audience. तो थोड़ा अभी खुल के बात करते हैं. Let us give ourselves ample time to talk about uniqueness. अच्छा, तो just to again set the stage, I mean the real question is uniqueness is a necessity, right? अपना क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आइडिया में यूनिकनेस नहीं है तो भी वो सक्सेसफुल हो सकता है क्या? जिस आइडिया में यूनिकनेस है उसमें सक्सेस होने का चांस है. दैट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट. द क्वेश्चन इज जिसमें यूनिकनेस नहीं है वो भी सक्सीड कर सकता है क्या? So I think basically it can succeed, but it will have limited success. It will be like one kirana shop, another kirana shop, same model, same success. It will not gain until and unless it innovates, like many other brands, like Reliance. That kirana shop will remain as a kirana shop if only the same model is replicated. Apurva, go ahead. Apurva wants to share some comments. Go ahead, Apurva. Yeah. आप मुझे सुन पा रहे हैं? Of course, ma'am. Thank you so much. The debate is very, very attractive, practical. But one thing I have to say, each and every company has a unique case study. Why they have failed, why they have got success. For example, one thing I have to say, Motorola are the first to invent or whatever to produce a mobile, and their designs are unique, but they have not adapted according to the time, or they have not changed according to the time. The second example is Kodak company. The same first bird, early bird करके सारा एडवांटेज उनको कोडैक कंपनी को मिला, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम उन्होंने अपने अपने कोडैक प्रोडक्ट्स को रील में ही रखा, तो उन्होंने वो आगे में जाकर डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. तो इस तरह से एक बिग कंपनी जब टाइम के अनुसार काम नहीं करती है तो उसको फेल्यूर फेस करना ही पड़ता है. तो आप
कि आइडिया बहुत बड़ी होंगी, कुछ भी हो, लेकिन इट शुड बी अ ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल आइडिया कि आप कहाँ जाकर कहाँ काम कर रहे हो। वैसे ही आपका जो कह रहे हैं ना अल्गोरिदम, मैं मानती हूँ अल्गोरिदम से हम लोग को ट्रेडिंग करना जम रहा, वेरी गुड, फ्रेशर्स को अच्छा रहेगा, लेकिन मालूम है एक्सपर्टीज का क्या रीजन है? दे हैव सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच आर सेट, those parameters are repeatedly used and past में जो रिजल्ट कंपनीज ने दिए हैं that is not necessary कि वो आगे देंगे. So here we need an expert advice and here we have to focus more to give good advice to our client to encourage them to invest more in good companies rather than we are believing in algorithm or any AI product. We have to use our own experience. By experience, more things can I say, sir? मैं बोल सकती हूँ? Of course, ma'am. Go ahead. हाँ, तो जो चीजें हमको एक्सपर्टीज के साथ काम करके हम उनको टेक्निकल प्लस दे रहे हैं, तो इट विल बी एन एडवांटेज. क्योंकि आप जैसे कंपनी, अगर हम फेसबुक रॉ एग्जांपल मैं अपना देती हूँ, जब हम शेयर मार्केट के बारे में पूछते हैं, हजारों कंपनीज बता रहे हैं कि हम ऐसे एक स्पेसिफिकली ऐप हमने क्रिएट कर दिया है, लेकिन वो ऐप से हमको यूनिक आइडिया कैसा हो सकता है, हम छोटे से छोटे टाइम में हमारे क्लाइंट को हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे दे सकते हैं. ओनली वी शुड नॉट फोकस ऑन वन, we have to focus on mutual fund also, because common people start their investing initial stage at mutual funds. So we have to take that product also, we have to take the insurance product also, and vigorous and expert share जो लेते हैं उनके लिए कुछ अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे. लेकिन लोगों को ये शेयर मार्केट तक आने के लिए, उन लोगों को ये डर निकालने के लिए we should develop our app like that only. अब उन्होंने कहा कि जीरोधा और ये जो है ऑन टाइम हुआ है, लोगों को समझ में आया कि मोबाइल ऐप से, एंड्रॉइड ऐप से ये सब काम कर सकते. बिफोर दैट आप जानते होंगे कि वो 3-3 दिन लग रहे थे शेयर खरीदना और बेचने में. तो ये अब एंड्रॉइड फोन से हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, ऑन द टाइम हमने उसके विगरस यूज करना चालू किए और देखा ये ठीक है. एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत कम कमीशन लिया, लेकिन दैट इज नॉट द केस. लोगों ने एंड्रॉइड फोन को इजीली अडॉप्ट किए और उनको ऐसा लगने लगा कि हम आप कर सकते हैं, और आपका शेयर मार्केट जो पेपर वर्क में था वो उनके हाथ में आ गया. अब आप लोगों का काम क्या है कि आपने ये यूनिकनेस देकर आपका एक प्रोडक्ट डेवलप. सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं सर, मैं बैंक में काम कर चुकी हूँ, तो हमारे हर एक बैंक में अलग अलग सॉफ्टवेयर उन लोग देते थे, वो ट्रेनिंग देते थे, 2 दिन 3 दिन में हम लोग ट्रेन हो जाते थे, एक एंट्री मारा बैलेंस शीट तैयार हो जाता था. लेकिन व्हाट न्यू एंड व्हाट यूनिक अबाउट यूर ऐप, ये आपने फोकस करना चाहिए. दूसरा, ऑल प्रोडक्ट शुड बी देयर. एक आधा ले मैंने नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो यू शुड बाय रिसर्च, यू शुड, योर टीम शुड गिव कॉन्फिडेंस कि नहीं ये डेट है, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं. तो इतनी तरह के आप जब अपने टीम ने रिसर्च वर्क करके एक क्लाइंट से बात करेंगे, 101% वो आपको टर्न आउट होगा. Thank you, ma'am. Thanks a lot. जी जी जी, थैंक यू सो मच. Yeah. Go ahead, Maitri. Anything you want to share? So Professor I was just saying Purva Pathak that, gave us a lot of input about how banks work and how doesn't Diamond should be thinking about its innovation. Thanks a lot, ma'am. बताओ मैत्री थैंक यू. क्या बोल रहे थे आप? हाँ. so मैं वही, I want to reiterate her points that with respect to uniqueness, what she said, Yes, that if at yes. all we do not create something unique in our repeat, like, see, models or business models are repeated, but unless and until that business model doesn't have anything unique, it will not overtake others, it will just remain one of the many. That is what I wanted to say. मैत्री That is all. क्वेश्चन के पॉइंट्स दे दो तो.
Otherwise, I think we have all the points. We are just waiting for Maitri's last points to the last question. I have given Pratik, just take a look. Okay, I'll take a look. Yeah. Acha, I just saw. Maitri, I'm confused. Which team is team A for you? Maitri? Instructor team is team A for me, and Acha, product development team is B. okay, got it. Okay, just counting the scores. 1 second. Huh? Okay, so the results are out. Very close competition. It's been the closest competition among the three competitions we've had till now. But that was a given. Both the teams were extremely smart. So the scores were 133 for instructor team and 107 for product development team. Excellent debate. Gave me a lot of ideas. Thanks a lot for both the teams. Anybody else in the audience that wants to make a point, please go ahead before we wrap up. So I just have a comment, and so an idea, of course, the idea translates to a product, but I also feel that without innovation, it can just be a stagnant company, right? Or it can even lead to failure of or a shutdown of the company if the company is not innovating at all, and the So I product think is perfect. let me just try to grab what you are trying to say. There are ideas and then there are companies, right? Right. A company does not succeed on the basis of one idea. It needs multiple ideas to reach success. Is that the Right. point you're trying to make? Yeah. Well, in a way, yes, but it can be one idea, and which is translated to the product, right? An idea for a company, an idea will get translated to a product, and then the company survives based on that product. However, uh, if the product is too perfect at the first go, then the longevity of the company uh, can be I don't want to say questionable, but one has to basically the company will have to innovate on the product and not make the product completely perfect at the first go, because uh, otherwise there are chances that it may the company's survival might be at a stake, is what I feel. So let's put it in the context of dozen diamonds, right? I mean, finally, it's a debate there where we are trying Right. to relate Right. what dozen diamonds is doing. Okay, we all know that dozen diamonds has innovated in terms of an algorithm, Right. but one of the quotes I read from Steve Jobs, or in fact, I heard from in one of the videos, where he says that a company that believes that an idea will lead to its success is most likely destined to fail. It is when you start building the right processes around that idea. Right. It is the processes that makes a company succeed, not the idea, right? Idea is a good point to start, but it is Right. also critical that the company has the right processes in place within the company for it to Right. succeed.
And that's what I've been trying to do for the last 1 month. I want to put in the right processes in place so that innovation becomes a habit for us. It just does not happen. It is not that we are just relying on our laurels that we already have. We get into the habit of innovating continuously. It is the process of continuously innovating that is going to make us successful and last for a long time. And that's what I want to achieve for Dozen Diamonds. I know it Absolutely. can be very painful for most of the teams because they are going through a process where they are making them do things they have never thought they would ever do. But the whole purpose of that is to build the right processes so that innovation becomes a habit for us and not something that happened once and then never happened again. So Yeah, and I commend you for that, because that is, I feel that is the mantra for longevity of a company, right? right. I Thanks. mean, even investors, they respond to that when they see that a company is not sticking to one thing and just holding on to that. It is believing in changing its processes to change the entire industry. It is investors are bound to notice that. So, Yeah, yeah. Thanks, for Pratham. example, some of the things that Doesn't Diamonds is doing differently is firstly is transparency. Right, Ultra transparent company. We throw our algorithms on the internet. We encourage our competitors to understand our algorithms. We are willing to communicate with them. We are willing to share with them. We are even willing to share our math with them. right, right, Right. And the reason we do that is we care less about our success. We care about the success of the investor. Whatever we right, have to do to make every investor successful is what is on our mind. And at right, some point, the industry as a whole is going to notice that. So right. Yeah. anybody within Dozen Diamonds who wants to add to that, add to their experience within Dozen Diamonds, what they've seen, what they have liked, what they have not liked, please feel free and go ahead because it is just us in the debate now. So, सर एक एक थोड़ा एक समझना था मुझे एक बात। बोलो। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी आइडिया छोटा होता है या बड़ा होता है। जो आइडिया बहुत लोगों के काम में आ सके तो हम उसको छोटा नहीं कह सके, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत बड़ा आइडिया है, ताकि वो बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा या दे सके। नहीं इंद्रजीत, एट दिस पॉइंट हम आइडिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बोल रहे हैं हाँ, कि आइडिया से कुछ नहीं होता है। हाँ, आइडिया आ जाने से कंपनी नहीं बनती। अभी तो डिबेट का टॉपिक ही चेंज हो गया ना। अभी हाँ। हम आइडिया की सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की सक्सेस की बात कर रहे हैं। हम्म, राइट। हम्म, तो जहाँ कंपनी के सक्सेस की बात आती है, इट कैन नॉट रिलाई ऑन वन आइडिया, इट हैज टू कंटिन्यूअसली इनोवेट to figure out how to make that idea, even that idea that looks like a brilliant idea, it requires at least 50 60 innovations around it to make it a successful idea. हाँ। सर तो मैं उस कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सर मुझे लगता है एक कंपनी जैसे आपका ऐप है, इसके लिए ना एक दो चीजों की बहुत जरूरत होगी जो आप है ऑलरेडी है। एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट एडवाइस प्लस रिसर्च बेस्ड एडवाइस। तो जो अभी आपके कोर टीम है, उन्होंने हर चीज को रिसर्च कर कर आपको देना है और आप यू अप्लाई योर एक्सपर्ट नॉलेज टू। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आ जाएंगे तो ये आगे वाले को बहुत इजी हो जाएगा कि वो लोग ब्लाइंडली आपके पर फेथ करना चालू करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही पैरामीटर्स पर बहुत अच्छे रह जाएंगे। नहीं, इसीलिए मैं पूरी कंपनी को रिसर्च मोड में डाल दिया है। अभी मैंने बेसिकली मैं बोला कि कस्टमर सर्विस टीम हैज टू अंडरस्टैंड आवर सॉफ्टवेयर, Yeah, they they have have to to talk to study our product development balance team. sheet. First of all, balance sheet should be studied very detailed. That balance sheet should not be fake or correct. Balance sheet should be studied. Of course मैम। Yeah, नहीं, हम अपना रिसर्च टीम को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हैं मैम। yeah. We have a research analyst team. We are going to grow that team in the next 2 months because अभी तक हमने यही बोला है कि customer has to pick the stocks. We will trade it for him. But now we are recognizing that we should not
put that entire responsibility on the customer. We should help him out. So हम उस पे भी थोड़ा काम करेंगे. Thanks a lot, ma'am. I'm Thank you, sir. surely going to meet you once I'm back in Nagpur. Yeah, sure, sir. In a week, and we'll have a long आप and मुझे interesting discussion. आपने मौका दिया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. आपके बच्चे आउटस्टैंडिंग है. Thank you, ma'am. उनके डिबेट करते रहिए. सुनते समय भी हमको कुछ नॉलेज बहुत ज्यादा मिल भी गया है. मैम ये भी मैं बता दूं, ये मेरे से तंग आ चुके हैं, बट मैं इनका पीछे नहीं छोड़ूंगा. राइट. सो आइएगा सर, जरूर जरूर. रैप अप करें. सिंह साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप? सर रैप करते हैं अभी, लेट अच्छा, हो गए हैं ठीक है. काफी, और कुछ ठीक है, ऐड ठीक है. करने को पॉइंट थैंक्स मैं लॉट, लेकर थैंक्स आऊंगा. लॉट फॉर स्टिकिंग अराउंड. मुझे एक मीटिंग चाहिए सर मेरे को आपके साथ, ऑफ उसका कोर्स. कुछ अपने जब दोस्त आप का. बोलिए, जहां आप बोलिए, मैं आपसे आके मिलूंगा. ठीक है. ओके ओके सर, मैं कुछ प्रिपेयर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. ठीक है. ऑल राइट ओके गाइस, सर. लेट्स रैप अप. हाँ. Thank you so much, everyone. Thanks a Thank you lot. so much. Well played, product development team. Thank you. Thanks. Thanks, everyone.